हेलो हेलो। ऑनलाइन पब्लिक, आई होप यू आर एबल टू हियर मी आउट। चलो 2:15 बज गए। किसी का खाना खत्म नहीं हुआ तो खाना खा सकते हो आप। सिर्फ नीचे गंदगी नहीं करने का, बस उतना एक ही रिक्वेस्ट है बस। चलो शुरू कर दें। Shall we start? Just a second. Okay, आ गया। Let me kick start. Good afternoon, friends. Let us continue our discussion. We kick-started with meaning of costing, cost accounting and management accounting yesterday. हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की थी और आगे जाएंगे हम। So this is what we had discussed yesterday. कुछ याद है आपको तो? Costing is a technique of determination of cost, or it is a technique for identifying a cost. Cost of what? Cost of a cost object. Cost किस चीज का निकालने वाले बच्चों हम? Cost object का। Cost object क्या हो सकता है? कुछ भी मतलब प्रोडक्ट, लोकेशन, सर्विस, प्रोजेक्ट, कस्टमर, एनीथिंग कैन बी योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, है ना? कुछ भी आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ अगर आपको समझा होगा तो। सो वी अंडरस्टूड कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड, डिपेंडिंग ऑन whether you can link a cost to a cost object easily or not. We have two types of cost on your screen. Cost, दो बच्चे, direct cost, indirect cost. समझा? Direct and what? Direct cost क्या है? A cost which can be linked easily to what? Cost object. Indirect cost which cannot be linked easily to a। बच्चों ये याद रखना, हर कोई कॉस्ट कभी ना कभी कुछ ना कुछ तरीके से आप फॉर श्योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट को लिंक कर पाओगे, बट डायरेक्ट कॉस्ट इज समथिंग विच कैन बी लिंक्ड इजीली, एफर्टलेसली, इकोनॉमिकली टू व्हाट? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो हम उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। बहुत सारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। हमने आइकिया का एग्जांपल लिया था, डीएलएफ का एग्जांपल लिया था, और कौन सा लिया था? मैरियट होटल का एग्जांपल लिया था हमने सर्विस इंडस्ट्री के लिए। अलग अलग एग्जांपल्स हमने लिए थे। बहुत सारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको एक या दो पर्टिकुलर एंगल्स आपको चूज करने हैं फॉर पर्पस ऑफ योर एनालिसिस। यू चेंज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कैन बिकम इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन बिकम डायरेक्ट कॉस्ट बाय चेंजिंग व्हाट? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट चेंज करो, आपका पूरा एनालिसिस चेंज हो जाएगा। हमारे सिलेबस में बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं बोला तो प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑब्जेक्ट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। हेडलाइन टॉप ऑफ द पेज। इन सीए कोर्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, product or group of products oblique category of products, product oblique group of products oblique what? Category of product is going to be cost object. तो हमारे लिए बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? प्रोडक्ट। उसके हिसाब से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएंगे आज। हाँ, whatever classification we are going to learn is on the basis of what? Product. ठीक है, समझ में आया तुमको? बच्चों कल बहुत सारे बच्चे सेल्स को अलग अलग एंगल से एनालाइज कर रहे थे।
लाइक B2C सेल्स, B2B, वो सेल्स का एनालिसिस हो गया. यू शुड ऑल्सो बी एबल टू असाइन कॉस्ट यूजिंग दैट एंगल. ये बेसिकली है क्या कंसेप्ट? क्लास में जैसे बच्चे हैं, मैं बच्चों को मेल फीमेल, होस्टलाइट लोकलाइट, फाउंडेशन डायरेक्ट एंट्री, फर्स्ट अटेम्प्ट, नहीं वो नहीं करना चाहिए ना, ये ऐसा थोड़ा. सो ये अलग अलग एंगल से जैसे मैं बच्चों को क्लासिफाई कर सकता हूं, वैसे ही हम कॉस्ट को क्या कर रहे हैं बच्चों? अलग अलग एंगल से क्लासिफाई कर रहे हैं. उसका बहुत यूज है आगे जाके. इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन व्हाटएवर वी आर डिस्कस सो फार, शूट अप द क्वेश्चन बिफोर आई प्रोसीड हेड. और उसके बाद मैंने आपको सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब सिखाया था, और उसके बाद हमने क्या सीखा था? गोटी, क्रिकेट बॉल एंड व्हाट? फुटबॉल. So costing is determination of cost. Then recording of that cost is a cost. And then applying that for decision making is management accounting. Right? Management accounting आपके syllabus में comparatively बहुत कम है. More part of the CA course will focus on costing. A little part will focus on cost accounting. And very, very little part will focus on management accounting. तभी भी हम कुछ केस स्टडीज करेंगे जो समझने के लिए, आपका विजन ब्रॉडअप होने के लिए थोड़ा अकल आने दो, जरा करेंगे. आज हो सके तो एक्सेल पे भी जाएंगे. आज खतरनाक कंसेप्ट कुछ, मतलब डेमो में. अरे तुमको जेन्युइन कॉन्सेप्ट सिखाएगा तुम, और रियल लाइफ में जाके अप्लाई भी कर सकता है तुम, उसका तुमको बहुत फायदा होगा. आज गारंटी नहीं देता आज आएगा या कल आएगा, बिकॉज हम कोई. हाँ बोलो बोलो जल्दी, डाउट बोलो. किसी को डाउट नहीं? इधर तुमको सब कुछ समझा है या तुम्हारा दिमाग ही अप्लाई नहीं करना चाहता है? जो भी कैटेगरी में अच्छा है. चलो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लियर है. अब मैं कॉस्ट को अलग अलग एंगल से एनालाइज करने वाला हूं, और आगे जाके इससे हम एक अल्टीमेटली, एक बार हमारा पूरा एनालिसिस खत्म हो गया, बीच में कहीं ना कहीं तो मैं आपको, जैसे हम अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक वी प्रेजेंट अ P&L, हियर वी आर गोना प्रेजेंट कॉस्ट शीट, SHEET. सो चलो हम पहला एंगल देखते हैं. गिव द हेडिंग. आई एम गोना टेक अ कॉस्ट एंड आई एम गोना एनालाइज कॉस्ट मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स. डायरेक्ट इनडायरेक्ट कल हमने एक एंगल किया था. आई विल यूज मोर एंगल्स नाउ. So I am taking cost on the basis of, cost का क्लासिफिकेशन में क्या बेसिस पे कर रहा हूं? On the basis of variability. क्या बोला मैंने? Variability. फाउंडेशन में भी आपने ये सीखा होगा, फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं सीखा होगा. वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एंड देयर वाज वन मोर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. And that one more is kick-ass. Too good. Which one? Semi-variable. Why it is too good? It has features of both variable as well as semi-variable. Variable as well as fixed. Okay. So, कितने बच्चे करेंगे बच्चों? 3 बच्चे. On the basis of variability. तुमने नोटबुक में बहुत अच्छे से अलग अलग कलर से लिखना चाहिए, खतरनाक खतरनाक तरीके से. अभी तुमको ब्लैक एंड व्हाइट नोट मिलेंगे, लेकिन कलर वाले भी आएंगे. अभी देंगे ना, वो स्टाफ दे देगा आपको. अभी क्लास में इधर ही मिलेगा, कलर वाला भी आ जाएगा अगले हफ्ते. इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग, नथिंग एल्स. कंटेंट, आई फॉर योर इंफॉर्मेशन, द बेस्ट डेज ऑफ टीचिंग वेयर व्हेन देयर वाज अ ब्लैक बोर्ड, chalk, and because that is where a real interaction used to happen. There was no distraction to the student. जाने दो, वो जमाना आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा. हम चालू करेंगे, मतलब धीरे धीरे. अभी कुछ मैं बहुत सारी चीजें अलग से टॉपिक छोड़ के करेंगे, मतलब लेक्चर आवर्स में नहीं, लेक्चर के एडिशनल आवर्स में करेंगे. विल कॉल अप सम ग्रेट पर्सनालिटीज टू स्पीक टू यू. एनालिटिक्स है, अभी आपको आज ही समझ में आएगा, अभी इसके ऊपर ही करते हैं. फर्स्ट लिसन अप. आई एम कॉलिंग इट इज व्हाट?
वेरिएबल कॉस्ट। हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट है। सो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? अ कॉस्ट विच वेरीज विथ रेफरेंस टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ cost object. Cost object is what? Product. So quantity produced, if it increases, a cost which also increases is what? Variable cost. इतना सीख लिया, काफी है एग्जाम के लिए तुमको, हो गया। इतना ही तुमने इकोनॉमिक्स में सीखा होगा फाउंडेशन में। Cost which varies with reference to what? Quantity produced. So it is a cost. Why do I say quantity produced? Because product is my cost object, na? Can I take something else as a cost object? If I take something else instead of product, it will be service rendered. It can be customer. It can be project. It can be a location, right? But normally here, for a variable cost, fixed cost, generally speaking, cost object is what? अरे response चाहिए यार। नहीं, रिस्पॉन्स मतलब ऐसा दांडेकर ब्रिज जैसा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, एक नॉर्मल प्रोफेशनल जैसा रिस्पॉन्स है। प्रेडिक्ट कॉस्ट विच चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? बोलो। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। वेरी गुड। कॉस्ट विच चेंजेस विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है ना? होपफुली आज ये सारा कंप्लीट हो जाएगा ना आज और कल। बाय द एंड ऑफ टुमारो यू शुड बी रियली गोइंग मैड। आज फ्राइडे ना? हाँ। बाय टुमारो आई थिंक आई विल बी एबल टू फिनिश अ गुड चंक ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। यू विल गो मैड। संडे को मैं आपको बहुत सारे बिजनेस के प्रेजेंटेशंस देने वाला हूं। जिनको भी इंटरेस्ट है, यू गो थ्रू द प्रेजेंटेशंस, कि कैश प्रेजेंटेशंस है, यू विल अंडरस्टैंड अ रियल धंधा। ये जो सिखा रहा हूं ये अप्लाई कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा चीज समझेगा आपको, कंप्लीटली नहीं, बट शुरुआत हो सकती है। कॉस्ट विच चेंजेस, ठीक है। दूसरा कॉस्ट कौन सा है बच्चों? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट क्या है? डज नॉट चेंज विथ रेफरेंस टू व्हाट? क्वांटिटी प्रोड्यूस। डज नॉट चेंज, ये तो बेसिक है यार, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या बोलता है बच्चों? सेमी वेरिएबल में क्या रहता है? देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देयर इज पार्शियली व्हाट? पार्शियली फिक्स कॉस्ट, और एक पार्ट रहता है जो वेरिएबल रहता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। partially fixed and what? Partially बोलो वेरिएबल। इनके ग्राफ्स वगैरह सब कुछ देखेंगे, बट एक एमसीक्यू अभी तक कॉस्टिंग में नहीं हुआ ना, तो एक एमसीक्यू हो जाए इसके ऊपर। बहुत बेसिक एमसीक्यू देता हूं मैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं सिखाता हूं मैं, बहुत बेसिक। एक मतलब हो गया, ठीक है, ये तो मतलब बकवास करा। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग is variable cost? Which of the following is what? Variable cost. Option A, depreciation under SLM। 11वीं का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, आई एम अज्यूमिंग हियर पीपल आर फ्रॉम कॉमर्स। देयर इज वन भाई साहब हु मेट मी यस्टरडे, IIT, मतलब वो बीएससी से आए थे। वो कहां पर है बीएससी? तो थोड़ा सा दिक्कत, बीएससी वाला फेलो किधर गया? वो बैचलर ऑफ साइंस करके आए तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। ऐसा कोई साइंस या इंजीनियरिंग करके आया होगा तो ऑब्वियसली यार, मतलब अब SLM आई कैन नॉट एक्सप्लेन। स्ट्रेट लाइन मेथड, 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स या वेरेवर। डेप्रिसिएशन अंडर WDV मेथड। SLM में मेथड वर्ड था
M के अंदर मेथड है. C. So I assume you know under SLM method depreciation does not change. Under WDV method depreciation C. Both of the above. अभी कुछ तो देना है ना. Both of the above. D. None of the above. Do not discuss. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. देखते हैं. चलिए वोट शुरू करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर ऑफ ऑप्शन ए, वेरिएबल कॉस्ट ए, स्ट्रेट लाइन मेथड? हाय. ऑप्शन बी, WDV मेथड? WDV मेथड. WDV मेथड. ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव. ओके, मैं एक ऑप्शन ऐड करता हूं, कंफ्यूज्ड. ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. ई, कंफ्यूज्ड. चलो, गुड. बेसिक्स ऑफ सेंस था. करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव. Depreciation. अरे गधो. Why will depreciation change under SLM and under WDV with reference to quantity produced? Under WDV depreciation changes, but it is not with reference to quantity. It is with reference to year. It is with reference to change of year. Year change हो गया, depreciation changes. SLM depreciation does not change. So I have seen students saying SLM depreciation is a fixed cost. Why? It remains fixed. WDV depreciation is variable. Why? It keeps on declining, changing. WDV depreciation keeps on changing, hence variable. SLM remains fixed, hence fixed. No. अब तुमने आंसर सही दिया तो मेरे को अगला क्वेश्चन बनाना ही पड़ता ना. हाँ ना. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. देखिए, टोटल कॉस्ट फॉर ईयर 2021-22 is rupees 315.86 crores. हम छोटे अमाउंट में विश्वास नहीं रखते. 315.86 crores total cost. 60% of the cost is variable. 60% of the cost is what? Variable. During 22-23, company plans. This is very, very basic question. Huh? You are so intelligent. I have understood just now. Company plans to increase output by 14% in 22-23. 14% you want to increase what? Output. Do you understand put? You wish to increase output by 14%. समझे? अरे खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन. इन्फ्लेशन. आप बोलेगे क्या सर कॉस्टिंग था ना, इन्फ्लेशन कहां से लाया? वेट. Inflation expected in 22-23 is 5%. What is total cost in 22-23? Purposefully I am not giving options because there will be so many options I can't fit them in 4. And I'll have to give none of the above, and majority will get right as none of the above because you're wrong.
So I just want you to calculate the answer. It's a too good question. Just apply brain. Apply brain. This is something to do with the 5th standard. All the things that are required are given in the question. Brackets क्या brackets? Option में brackets देते मतलब? Oh, he says, sir, in options, do they give the range? 100 crore to 200 crore. फिर बच्चा correct आएगा ना? Range नहीं है, you calculate. Assume this is not a MCQ question. I want you to understand by making mistake. You'll make a mistake, but you'll learn a lesson. You'll learn a lesson out of it. मस्त क्वेश्चन है. गिव इट अ ट्राई. यू शुड हैव कैलकुलेटर विथ यू. ऑनलाइन पब्लिक चैट बॉक्स में टाइप कर. क्रोर्स में आंसर चाहिए. राउंड ऑफ हो गया तो भी चलता है ऑब्वियसली. कौन सा क्लब है रे तेरा? कौन सा? नेदरलैंड कंट्री है, क्लब नहीं है. वर्ल्ड कप में नेदरलैंड कंट्री जीता था क्या? हारा था ना? सो अर्जेंटीना जीता था ना मेरे हिसाब से. हाउ मेनी गॉट द आंसर? इट शुड नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम. जी भाई साहब. 357, 359.51, 353, 348, 334. आईपीएल की बोली लग रही है. 353 ना, सेम आ गया तो छोड़ दो. 359, 479. आहा, 360, 245 ऑनलाइन. वाह रे वाह. क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल कॉस्ट मिस्टर सार्थक. बेटा पिछले साल का कॉस्ट ही 315 था. हाउ कैन द नेक्स्ट ईयर बी 245 रे? मिस्टर सार्थक, डू यू लिव इन अ कंट्री वेयर इन्फ्लेशन इज नेगेटिव? $332. This figure is 315.86. 425, 359, 378. Aha, 420. What have you understood? India has got a talent. Diversity. 358. Okay. This is a huge range. Only one fellow has got below 315. 200. No, one more. Arya Jain. Arya, arey beta, please. Last year cost is 315. Next year cost should be higher, na? 349. Okay. Mr. Somani, you just said 479 few minutes ago. इसलिए नहा के आना चाहिए क्लास को. प्लीज आप इंश्योर करना कि आपका नेबर जो है वो नहा के आ रहा है. ओके, इनफ. लेट अस चेक द आंसर. 352. तो बस एंड में मैं पूछूंगा हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट. एट दैट टाइम जस्ट रेज अ हैंड एंड शो योर टैलेंट. Just remember, you see the hands now. In the previous question, so many hands came up, na? Now you see. And even now, if you have got right, the next question I will set again. I will not give up. Listen to this. It's a basics of common sense. What was my cost? 315.86. Right? This was your total cost of the 22-23. Out of this cost, is everything fixed? No. How much is variable? Variable cost in 21-22. 21-22. How do I get 315.86 into 60% is variable? Tell me how much is it? 189.5. 516, yeah, 52. That is okay. Rounding off that much, rounding off is okay.
Understood? This is a variable cost of 21-22. What do you mean by variable cost? A cost which changes with reference to quantity produced. So your quantity produced went up by 14%. If a quantity produced goes up by 14% and nothing else happens, nothing else को क्या बोलते हैं English में? Ceteris paribus. What word I used? So ceteris paribus, assuming all other things being constant, if quantity goes up, variable cost also goes up. Do you agree? Quantity goes up, variable cost goes up. Do you understand? Quantity produced has gone up or quantity sold has gone up. Add increase due to quantity. 189.516 into 14%. Tell me. 26.532. ठीक है. It is okay. Subtotal tell me. Quick. 216.048. What is this? 216 would be the cost in 22-23, assuming no change in price level, but assuming change in only quantity. Do you understand this? Cost is a function of two things, quantity and price. Assuming no change in price or the inflation, cost would be 216.04, but there is a inflation. Add inflation. Inflation will come up on entire 216. Why? 189 was a cost last year. To that I add 14%. To that I have to add 5%. You can do it on a calculator also straight away. I know that. Don't try to be too smart. 216.048 into 5%. Bolo. Arey, into 10.802. 10.802 is the impact of inflation. Due to inflation, due to price level change, cost has gone up. So this is variable cost for 22-23. Variable cost for 22-23. Tell me how much is it? 226.85. This is not the answer. Why? There is a fixed cost. I ask you total cost. How many of you got it right? Up till now, obviously. How many have got it right up till now? Almost 60% of the class is out of the competition. Remaining 40% let me knock off. Fixed cost. You should not change your answer now. That is cheating. Have you understood this? Clear? Look at. Variable cost has an impact of both quantity, that is, quantity is also known as a volume. Awaaj nahi? Volume. Quantity is a volume. Variable cost is affected by volume change plus price level change. So we have done a volume change and we have done what? Price level change. Let me take up fixed cost of 22-23. Abhishek, useless. 21-22. 315.86 into how much percent? 40%. Because 60 is variable, or you can do minus variable, whatever you want. 126.344. Rounding off, please do not cry. Now, increase due to quantity is not applicable to fixed cost. Why it is not applicable to fixed cost? Fixed cost remains fixed, irrespective of quantity. Even if you increase the quantity, fixed cost will not change. But sometimes fixed cost changes because of change in quantity also. हाँ बोलेंगे
हैं? Have semi variable नहीं है बेटा, जरा please listen. Don't get excited because you have got it right so far. I said sometimes fixed cost changes because of change in quantity. I'll come down to that. Have patience. Add what? Inflation effect. What is the inflation in the question that I given? 5% is a inflation. 126.344 into, take on a calculator, 5%. 6.317. 6.317, have you got it? So what is your fixed cost? 132.66. So this is A, variable. This is B, fixed cost. Do you understand? So get the total cost. You should have written the answer. If not, write it. 359.11812 crores. 12. I'll come down when fixed cost changes due to quantity. How many have got it right? This is the correct answer. फिक्स कॉस्ट पे इन्फ्लेशन क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि तुम फाउंडेशन में ही है अभी तक मेंटली. कम हियर, कम हियर, कम. फिक्स कॉस्ट में इन्फ्लेशन क्यों आया? His question is, why did you add a inflation to fixed cost? You people have literally learned fixed cost means fixed cost. अरे चुप. Fixed cost, can it not change? Fixed cost is fixed during that year, irrespective of quantity produced in that year. Did I ever say, or did you ever learn like this in the foundation, that fixed cost always remains same forever? For example, you are going to work as an employee in a company after becoming a CA. Initially, you are appointed at a salary of rupees 2 lakh per month. Huh? 2 lakh per month. Will you keep on working 2 lakh per month forever? If there is an inflation, obviously what will happen? You will also ask for a higher salary, some 4-5% increase in the salary. So, does the inflation apply to fixed cost? Yes. Does a quantity level change apply to fixed cost? No, generally, but there is one point that I have to explain. Have patience. Ligo. You're gonna go mad after this. अभी तक शुरू हुआ है just. और 1 घंटा लगेगा मेरे को इसको खत्म करने के लिए. Minimum. लिखो आंसर. आंसर लिखना है. करेक्ट आया तो चुप बैठो. राउंडिंग ऑफ इज ओके. Sir, I got it right. 359.5. That is okay. If you have followed a similar method, that is okay. Rounding of numbers is absolutely okay. जी बेटा. वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को सेपरेटली इंफ्लेशन कैलकुलेट किया. 5% इंफ्लेशन कैलकुलेट करता है. यू कैनॉट आइडेंटिफाई देन. हिज क्वेश्चन इज, sir, if I take a total cost and add a inflation of 5% on total, then you need to identify increase in quantity effect on a variable cost. Like for example, देखो, what was the earlier cost total? 315.86 था तुम्हारा. Plus 5% you do plus 5%. This is inflation impact. 331.653. Just wait. 331.65. Then of this 60% is variable. ऐसा किया ना तूने? बोलता हूं ना. रुक. Take on your calculator. 331.653. ले लो. Into 60%. Variable है. Into 14%. That is the increase in variable cost. 27.85 crore total. $359.51. So it is similar, just a difference of what? Fraction. What you have done, 5% आ गया, but quantity increase you should take only on variable cost. You should not take a
quantity increase on fixed cost. You should have done of this cost. This is increase due to quantity. Quantity effect only on variable cost, but this, my presentation is way better than yours. So I don't like this. लिखो सर फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को एक साथ ही इन्फ्लेशन 5% ऐड किया, हाँ चलेगा, यू विल गेट द आंसर, सेम आंसर अभी दैट इज व्हाट आई शोड ना, बट जस्ट वेट, आगे जाके और बहुत सारे फैक्टर्स आने वाले हैं. दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू split the cost into what? Two parts, variable and fixed. On a variable cost part, you will have quantity effect as well as inflation or price level effect. Volume as well as price. Both the effects will be there on variable cost. And on a fixed cost, it is just the price level change. लिख के हो गया तुम्हारा आंसर? नीचे लिखो नोट. You should have written it simultaneously. Variable cost changes. Variable cost changes because of both volume level changes and price level changes. Variable cost changes because of both volume level changes and price level changes. However, fixed cost changes only because of, bolo, only because of price level changes. Only because of price level changes. क्वांटिटी का इंपैक्ट कब आता है वो बताता हूं. हैव पेशेंस. फिक्स कॉस्ट चेंजेस बिकॉज ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. देयर कुड बी अदर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन दैट यू कैन फॉलो, दैट इज अप टू यू. लिसन अप नाउ. व्हाट इज अदर प्रेजेंटेशन? दैट इज राउंडिंग ऑफ डिफरेंस. You should first add 5% to everything because inflation is going to affect variable cost, inflation is going to affect fixed cost, price level change. Please remember, inflation in variable cost can be different, inflation in fixed cost can be different. I have not given in the question. It's not that inflation is same in all the commodities. Like food inflation is different, tomato prices are increasing. But inflation might not be that much in a milk price. Inflation might be too much in, let's say, cereals and pulses. It might not be there in electronic goods. So it's not that inflation will be same in all the commodities. Few commodities it will be there. Price level changes means inflation. Yes, beta. Change in price level means inflation and deflation. Deflation can also be there. That is a decline in price level. Have you understood this? Price level is inflation oblique deflation. Volume is quantity. Understood? Okay. We have just started on variable and fixed cost. We will go to a Jannat by the end of the lecture. I have not gone to semi-variable so far. Semi-variable cost kya hota hai? I have not explained. I am still on variable and fixed first. If you understand variable fixed, semi-variable is much easier. It's just partly fixed, partly variable. Listen to this. ठीक से सुना line. Listen to this. Fixed cost is incurred. Fixed cost is incurred for creating a particular capacity. Fixed cost is incurred for creating a particular capacity. As capacity utilization changes or as a capacity is breached. No, Abhishek, simple language. As capacity is over, you have to increase the capacity. And to increase the capacity, you have to incur additional fixed cost. Bouncer. लिखेंगे नहीं ना, ऐसे बैठ के देखेंगे ना सिर्फ. Fixed cost is incurred for creating a particular capacity.
if your capacity is over means 6 ball nahi hue. You'll say capacity is over. Capacity is over means entire capacity is utilized and you want to produce even more. What you'll have to do? You'll have to incur additional fixed costs because you'll have to increase your capacity. So what is the moral of the story? Fixed cost is incurred for whom? Bolo, for creating a particular capacity, not Honda City. For creating capacity. As soon as that capacity is over, what you have to do? You have to increase the capacity or stop expanding. Don't expand the business. Capacity is over. You want to keep quiet? Keep quiet. Do nothing. So, but if you wish to increase your capacity, you'll have to further incur additional fixed cost. So, fixed cost is not dependent on how much you have utilized your capacity. It is how much is your capacity. Bouncer, how much is your capacity is one question. How much is a utilization of capacity? Utilization of capacity? दिखाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं. लेट मी एक्सप्लेन. आई नॉट एक्सप्लेन. 2 शब्द ठीक से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज बिजनेसेस. क्या लाइन बोला वापस? हाउ मच इज योर कैपेसिटी? दिस आंसर अफेक्ट्स फिक्स कॉस्ट. हाउ मच इज योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? दिस आंसर अफेक्ट्स वेरिएबल कॉस्ट. How many understood? क्या आइटम लोग रे? तुम्हारा कैपेसिटी कितना है? एक सेकंड, ठीक है. Any business entity, in order to produce something, they have to set up a plant, or they have to create a building, or they have to buy certain assets. Depreciation of an asset is what? Fixed cost. For a particular capacity of a plant, you have to appoint certain number of employees. The salary of those employees is a fixed cost. Matlab, whether production is going on or not, those employees have to be there. Why? Those employees are in charge of maybe maintenance, maybe security of a plant, maybe overall administration of a factory. So, whether you produce 1 unit or 100 unit or whatever the number of units, you have to incur certain cost. That cost is what? Fixed cost. So let's take a simple example. The other day I had given you example of BCL Industries. So I take you to screener. This company makes what? Ethanol. So screener पे लेके गया मैं आपको, capacity आपको दिखेगा वहां पर. I take you to BCL Industries. I go to key points. Key points I click on read more. Now here you will find out manufacturing capacity. Not for every company, certain companies का कोई तो लिखता है वहां पर. So देखो क्या लिखा है उन्होंने? Edible oil. Edible oil समझता तुमको? खाता है तुम हर रोज? Very good. The manufacturing plant is located in Bhatinda, Punjab, with a capacity of 1020 tons per day. So they process 1020 tons per day is what? Capacity. Is a capacity. Segment-wise capacity is 300 tons per day for oil seed crushing and solvent extraction each. Oil seed से edible oil. Edible oil बनने के बहुत सारे sources है, right? You can make it from sunflower oil. You can make it from peanuts. You can make it from soya bean. There are so many different ingredients from which you can make a edible oil. Hair oil नहीं है ये. 300 tons of oil seed, 300 tons of solvent extraction and refining capacity of 420 tons per day. छोड़ दो. What you have understood? उनके पास 1020 tons का capacity है एक दिन का. Now that 1020 tons का जो capacity है उसके लिए उन्होंने plant डाला होगा. For that particular plant, you would have incurred certain capital expenditure. Machinery you would have purchased. You would have bought a building. You would have bought or constructed a building
You would have bought some machines, you would have set up the certain number of employees. Now whether you produce 1 ton or 100 ton or 200 tons or 1000 tons, what will happen? Will depreciation change? Under SLM, under WDV? Those who have passed foundation, there is one more method of depreciation. Machine hour rate method of depreciation. Under that machine hour rate method, depreciation will change on quantity produced. But under SLM and WDV, does the depreciation change based on quantity produced? Answer is big, no. So depreciation is what? Fixed cost. It is dependent on capacity. How? Instead of 1000 kg, instead of 1000 ton plant, I set up 500 ton plant. Will depreciation remain same? No. Why? Machines, I will require of a lesser amount, na? 500 ton plant and 1000 ton plant, do you think machine will be same? If machine is not same, will the depreciation be same? Means what? Depreciation is a fixed cost, but it is dependent on what? It is dependent on what capacity you have created. What capacity you have created. क्या item लोगे sir वो 226.85 plus 132.66 is not 359.12, it is 359.51. क्या है रे वो 51 है क्या? 51. खुश? मैं बच्चों ने जो बोला लिखूंगा यार. Why are you irritating on what? Calculations. 51. खुश? Fixed cost is incurred for a capacity. BCL Industries makes a edible oil. अब edible oil 500 tons का plant डालू और 1000 tons plant I put up. Tell me, will depreciation remain same? No, depreciation will be different. That means how much is a capacity? That question will change my fixed cost. So fixed cost is incurred for creating a capacity. 500 ton capacity, 1000 ton capacity, 2000 ton capacity. Depending on what capacity plant I need to create, I will require building, I will require machinery, I will require that much of employees to take care of the plant. I'm not talking about the workers who are engaged in production. I'm talking about the workers who are in a factory. Do you think you just need a worker for production? Is the production the only activity? You need to look after administration of the factory. You need to look after security of the factory. There are other functions also, no? There is a finance function to be carried out. So fixed cost is incurred for creating capacity. Do you agree first? Very good. Now I say during, listen to this. What is my capacity below? Tell me capacity. How much is capacity? 1000 tons. 1000 ton is my capacity. I say if 1000 ton is my capacity, my fixed cost for 22-23. My fixed cost for what? 22-23 is rupees. My fixed cost for 22-23 is rupees 150 crore. ठीक है? Assume figure, for example. Now, whether I use 600 tons or 800 tons or 900 tons during 22-23, tell me, will this 150 crore amount change? No. That is why we are calling 150 as what? So fixed cost is not dependent on utilization of capacity. Your brain has capacity to work for 18 hours a day. Until day before yesterday, you are using 0 hours a day. And sudden of all, we have pushed it to 11 hours a day. And that is a problem for many. They are not able to increase capacity utilization from 0% to almost 60-70% or 80%.
Why? Until day before yesterday, sir, कुछ नहीं कर रहे थे हम, 0%. Your brain was working at 0%, and sudden of all, 8:30 to 7:30. Brains have been put to use, which were idle. I hope you understood. Are, please do not ask questions in between. I will not answer. I will answer the questions when I say any questions. Do not irritate you to public. Please understand. I know you have capability of chat box, but control. When I say questions, that time ask. 2 questions. How much is the capacity? And next question is, how much is the capacity utilizations? First question is relevant for fixed cost. Second question is relevant for variable cost. Let's put 2 companies in perspective. On your screen, companies, BCL Industries, 𝗙𝗪. 𝗙𝗪 also makes edible oil, I hope you know. BCL also makes a edible oil. Let us assume both of them are making edible oil from sunflower. You can make it from sunflower, soybean, peanuts, whatever. Assume both are making from what? BCL has a capacity of 200 tons of sunflower processing. 𝗙𝗪 has 3,000 tons. 200 tons, 3,000 tons. Tell me, what should be different? Amount of fixed cost should be different. Why different? Capacity itself is different, yaar. Capacity itself is, as your capacity utilizes, but as your capacity changes, fixed cost also नीचे लिखो. As we increase our capacity, as we increase our capacity beyond the existing capacity, fixed cost will also change. Fixed cost will also change. Why fixed cost will change? Because you have increased the capacity. If you increase the capacity, obviously what will change? Fixed cost will undergo a change. No doubt about that. Fixed cost will change as we increase the capacity. Now, let us understand more. I am not done. I'm not done on the fixed cost itself. Tell me, if someone sets 200 tons plant and someone sets 300 tons plant, will the fixed cost per ton be also same? Answer is no. Matlab, listen, this is beauty, this is Jannat. 200 tons plant, I say fixed cost is rupees 150 crore. Kuch bhi bolo yaar. And I say 3,000 ton plant. 3,000 ton plant. Do you understand that? Is rupees 1980 crore. हाँ बोलेंगे हैं? How is this possible, sir? 200 ton you created in 150 crore. For this company, cost per ton kitna आया? Fixed cost per ton. You can always say fixed cost per ton. This is the cost of setting up the capacity. 200 ton का plant set करने का capacity कितना आया? 150 crore. 150 upon 200 per ton. Fixed cost per ton. Please listen up. 0.75 crore. Because 150 was crores. और दूसरे कंपनी का कितना आया? 1980 crore divided by 3,000 point. Oh my goodness. Goodness. How is this possible? Bolo. Yes. Economies of scale. Simple, hai na? If you are running at a bigger scale, your fixed cost can change on a per unit basis. That is economies of scale. अरे यार तुमको धंधा नहीं चाहिए क्या रे बच्चों?
अरे तुम्हारे शक्लों पे दिखाओ ना कुछ तो। फिर ऊपर है ना ऐसे बॉल बिठा के रखूंगा और यहां से बटन प्रेस करूंगा ना मैं, ऐसा आके तुमको मारना चाहिए ऐसे। कुछ तो जरा एक्सप्रेशन है। Basically, fixed cost per ton also changes because if I'm setting up a small plant and if I'm setting up a huge plant, there is a difference. इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है जिंदगी में लाइन से। Listen to this. लाइन बोल रहा हूं, बहुत हेल्प होगा जिंदगी में। I have learned this line by making wonderful losses. Line is, I want to find businesses which get better with size. I don't want a business which gets worst with size. नहीं समझा तुमको, कुछ भी नहीं समझा। मेरा 15 लाख रुपए गया था, उसके बाद समझा मैं। कंपनी मालूम है किसको? बोलता हूं घटिया साला। Listen to this. I want to find a business. ये लाइन तुमको क्या बोलता है? I should find a business which gets better with size. That you increase the size, it should get better and better. It should not get worst and worst. बहुत हाई लेवल लाइन है, सीए कोर्स के लिए अगले 50 साल में भी काम का नहीं है। वैसे में बहुत सारा बोलते रहेगा, सुनना है सुनो, नहीं सुनना है तुम्हारा दिमाग इसके बाद इंप्रूव होएगा। लेकिन I had invested in a company which is India's largest highway maker. दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड करके। कोई तो कहता NHA बोल रहा है, दैट इज गवर्नमेंट। यू कैनॉट बाई शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। कल बोलेगा सर आई अबाउट मोदी जी। Listen to this. Dilip Buildcon makes a highway. I hope you understand. Now, whenever they used to get a contract for building a highway, I used to get excited. What a company. It has got a new contract to make a highway. But the problem with the business was, every time they had to make a highway, they have to bring machinery, labor, cement mixers, variety of things at every site. It was not possible for Dilip Buildcon to centrally produce a highway and then take it. Jai Shri Ram. Highway जाके रख दिया. Dilip Buildcon, it is not possible for them to centrally produce highways and then, okay, Madhya Pradesh government comes up. How much highway you want? 300 kilometer. Okay, 300 kilometer चल दे रहे उसको. It was not possible. So what was the problem with Dilip Buildcon? Every time they had to execute an order, they had to bring machine, labor, engineers, designers, go to that particular site, keep the workers there, keep machines there. So every order, they had to either take machines on rent or buy their own machines, road mixer, cement mixer, कितने सारे machines लगते हैं यार. And that was reducing their profitability day by day. Initially it went up, but it came down like anything. And I, like a fool, I had a huge profit but did not book because I thought it is the largest one. This is largest one, best one. It completes highways before time. So far 95% of highways that they have built up are before time. Amazing company. But this concept my teacher did not knew. I did not knew. Our syllabus does not know. Hence I made I should not blame anyone. I did not knew. Forget about anyone else. I did not knew. You know it now. What is the problem with the Dilip Buildcon? Every time you have to put up a capital, boss. Capital, whatever capital you build, out of that capital you have to buy machine. You have to buy equipments. That is resulting into fixed cost. Kyun? That machine has a depreciation. That machine I might have borrowed. Machine I might have purchased out of borrowed funds. Borrowed funds have interest, which is not with reference to sales. Interest is a fixed cost.
साला हर बार उसको धंधा अगर बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ता था? सेल्स बढ़ाने के लिए उसको ऑर्डर के लिए बिडिंग करना पड़ता था. ही हैड टू बिड फॉर अ हाईवे. मेजॉरिटी ऑफ गोवा इज बिल्ट अप बाय दिलीप बिल्डकॉन. मेजॉरिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज दिलीप बिल्डकॉन. बहुत सारे हाईवेज इसने बनाए हुए. बट एवरी टाइम ही बिड्स इट, he will have to bring equipment, machines, and it had a fixed cost, and it was not getting better and better and better with size. It was making more and more highways, it was winning more and more contract, but it was requiring more and more cost. Logically मेरे को कौन सा धंधा चाहिए? A धंधा which increases sales, but its fixed cost per unit comes down. Your fixed cost should be coming down as your quantity produced increase. Fixed cost total basis पे सेम रहेगा, लेकिन per unit पे fixed cost क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था. वो नहीं हो रहा था. किसको नहीं हो रहा था? दिलीप बिल्डकॉन को हो नहीं रहा था. कभी कभी तो बढ़ रहा था. क्यों बढ़ रहा था? बिकॉज वो वहां पे कौन सोया रे? 2 दिन तुमको अलाउ किया, इसके बाद अगर कोई सोया ना हो, परमानेंटली सुलाएगा. सुनना नहीं है, बाहर जाओ. इधर तुमने मेरे को खरीदा नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तो निकल जाना यहां से. सीखना है तो तहे दिल से सीख, नहीं तो अपने बाप को जाके बोल. अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, हाथ ऊपर करो, मैं सोने की परमिशन दूंगा. उसके बिना सोए ना, परमानेंटली सुलाऊंगा. ह्यूमन राइट्स बात पे बोलना मत. क्या बच्चे हैं यार, मतलब क्या जनरेशन हो गया है. नाउ यू मेरे को पूछते ना, सुमनी क्यों टीचिंग छोड़ रहे हो? ये ऐसे कमीने आते हैं. तेरे बाप को पूछ कितना मेहनत करना पड़ता है वो 90,000 रुपए फी देने के लिए. हाँ, मतलब यार इतना जेन्युइन कॉन्सेप्ट एक बुक में मिला ना तेरे को. कॉन्सेप्ट है, सिखाना छोड़ दूंगा बेटा. ऐसे ही बाल व्हाइट नहीं हुए. एडमिशन लिया क्या तूने? डेमो वाला रहेगा ना? हाँ ना? लिया ना एडमिशन? पैसा दिया ना? यूज करना फिर. मतलब बच्चों को यार क्या है, हो चुका है जनरेशन को यार तुम लोगों को. और तुमको अगर सिर्फ एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर, अरे एग्जाम में आता भी नहीं है यार ये एक भी कॉन्सेप्ट. डेफिनेशन के लिए आगे कुछ नहीं, बट तुमको जॉब नहीं मिलेंगे. हमने तुमको डे 1 पे तुमको क्या हालत है कोर्स की दिखाई मैंने. और साला एक कोई तो सिखाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे कुछ और टीचर्स होंगे. आई एम क्वाइट श्योर देयर आर, आई नो फ्यू ऑफ देम. देयर सम टीचर्स हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन टीचिंग, बट साला जनता इतना अपनी खराब हो गई है. अब धंधे के लिए मैंने क्या करना चाहिए? चिल्लाना नहीं चाहिए. धंधा हमको, तुमको टीचिंग इंडस्ट्री का सीक्रेट देता हूं. बच्चों की चाटुगिरी करो, मां बाप इमोशनल ड्रामा करो. तुम्हारे ऐसा नहीं चिल्लाना चाहिए. तुम्हारे मां बाप ने बेटा तेरे को कितना पैसा देके इधर भेजा है. कहां से आया तू बेटा? कहां से आया? प्रेस्टीज. हाँ, पिंपरी चिंचवड़. अच्छा, पिंपरी चिंचवड़ से 20 किलोमीटर दूर भेजा है तुझे बेटा. देयर आर ओनली, एक लाइन याद रखना, शिव खेरा का लाइन है. देयर आर ओनली 2 रिलेशंस इन योर लाइफ who dare to care you, parents and teachers. Unfortunately, the second category is reducing. First ones are also afraid. I see some parents coming up in the office and saying, हमारे बच्चों को मत बोलो हम ऑफिस में आए थे उसका प्रोग्रेस पूछने के लिए. और टीचर्स तो, मैं तो मेजॉरिटी लोग तो चाटुगिरी में ही इंटरेस्टेड है. बच्चों को मतलब टीचिंग में तुमको टीचर बनना, एक सीक्रेट बोलता हूं, बच्चों को कभी चिल्लाना मत. यो मैंने बोला तुमको, चांद बेटा आराम से मेरे ऊपर भरोसा रखो, तू पास हो जाएगा बेटा. तूने मेरे को पैसा दिया ना, बात खत्म. अब तू सो जा, या तू कॉन्सेंट्रेट कर, या इंस्टाग्राम पे खेल. मेरे बाप का क्या जाता, तेरे बाप का जाएगा. आई होप तेरे जिंदगी में समझा होगा. बुरा लगा होगा, बट आई कांट हेल्प यू आउट. नो सॉरी फॉर दैट. ऐसा कोई काम नहीं करेंगे ऑब्वियसली यार. अब सोचो ना यार, इतना. हाँ, तू बीमार है गया, तेरे को देख के लगता नहीं है. आराम से, इट्स ओके.
शुभ नाम क्या है बेटा आपका? आयुष, ठीक है, आयुष्मान भव। तो दिलीप बिल्डकॉन के धंधे में क्या हो रहा था, उसको हर बार सेल्स बढ़ाने के लिए नए नए मशीन्स लेके आने पड़ते थे, नए नए इक्विपमेंट लेके आने पड़ते थे, और उन इक्विपमेंट्स के लिए उसको क्या करना पड़ता था? फिक्स कॉस्ट इंकर करना पड़ता था। तो धंधा उतना अच्छा नहीं था। Then I found out some new, after I had started acquiring it, Dilip Bilkon at somewhere around 170, 180. This is way back 2016-17. Stock had rallied up almost to 1,000, sitting on about 8 times profit. You can ask old batch students, yeah, old YouTube पे derivatives के वगैरह lectures अगर आपने देखोगे तो उसमें आपको इसके references मिले भी होंगे। पुराने जमाने में बहुत पैसा कमाया, बुक ही नहीं किया। क्यों? I was greedy, human being है, हवस, कि अभी इतना कमाया और कमाएंगे, बिकॉज देयर वाज नो कंपटीशन टू दिलीप बिल्डकॉन, लिटरली इट वाज ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, सेल्स वर ग्रोइंग, एवरीथिंग वाज ग्रोइंग, बट स्लोली एंड स्लोली दीज फिक्स कॉस्ट वेर राइजिंग अप, इन्फ्लेशन हो रहा था, एंड दे वर मशीन्स व्हिच दे हैड परचेस्ड वेर नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड, एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्टेड कमिंग डाउन। जो ग्रोथ रेट दिख रहा था वो ग्रोथ रेट नहीं था, गायब हो गया ग्रोथ रेट। Stock price came down. I don't know where it is. I do not want to see it also. नहीं, breakup हो गया मेरे भी। So, point is, I'm just trying to tell you for your own benefit, while analyzing a business, just check out, whether the business has a potential to get better with what size. Let me give now another example. A business which can get better with what size? Paytm. When I understood this mistake, in your batch, there are some students in CA Foundation in Ekatvam. You can ask November 23 batch of intermediate also. Paytm, when they started about 6-7 months ago, or little more than that, Paytm started disbursing loans through the Paytm platform and started earning commissions. Loan was not given by Paytm. Loan was being given by a bank. Paytm just facilitated the transaction because Paytm had a data of what is being sold by a merchant. I am a merchant. I am a small medical shop owner or grocery shop owner. Whatever sales happen at my shop, who was aware? Paytm was aware. कैसे? QR code का transactions होता है. So Paytm knew my inflows. Paytm knew my some bank balances. Majority of these merchants have a bank account with the Paytm itself. That is, Paytm is a small finance. मतलब Paytm के पास payment bank का license है. There is a type of bank. So Paytm knew the inflows and outflows. So Paytm just goes to HDFC Bank, ICICI, or Axis, or IndusInd, and tells them, I have a grocery shop in, let's say, Pune camp area, who runs a daily turnover of around 6,000. His outflows are around 4,000. He makes a 2,000. He needs more money for working capital. Are you willing to give him more money for working capital? If yes, whatever be the amount of installment, I will deduct it from his inflows every day and give it to you. Paytm had a platform in place. Platform is a software in place through which merchants and the consumers were carrying out what? Transactions. For doing this, Paytm did not have to do anything extraordinarily extra great. So if first 100 crore loans are given, next 200 crore loans are given, next, if more and more amount of loan was given or facilitated through Paytm platform, Paytm को एक्स्ट्रा खर्च क्या था? Paytm को एक बार ही डेटा एनालिटिक्स का और कम्युनिकेशन का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना था, between whom the data of merchants without the name and everything was shown to the bank, and the offers that were given by bank are shown to a merchant on his phone app or laptop or wherever. So whenever a merchant logs in, merchant को क्या मिलता था बच्चों? ऑफर मिलता था कि ये ऑफर है, this particular bank is willing to give you what? This amount of loan. ये ऑफर कौन बोलता था?
Paytm उसको दिखाता था, and if the merchant is willing to take a loan, merchant used to take loan from whom? Paytm, from bank, which was, and Paytm को क्या मिलता था इसके ऊपर? Commission. Plus more and more transactions were taking place on Paytm, on which it was earning a commission. So matlab, as the number of transactions, as the sales of Paytm were going up, cost of Paytm was not going up. That means as the size of Paytm, sales of Paytm were going up, उसके cost उसी proportion में नहीं बढ़ रहा था. Paytm was getting better and better and better with what? Size. So this is what, if I'm operating at this capacity and this capacity, my cost should be coming down. I have to find out. ये अभी amount पे ऊपर मत जाओ. If my fixed cost per unit is coming down by whatever the reason, whatever be the reason, I want to find out such businesses. Those businesses are a platform business. When it happens, in order to increase sales, I don't have to make extraordinarily huge investment. Dilip Buildcon, in order to make more sales, it had to what? It had to make a more investment. Then only the sales was going up. You cannot make a highway centrally and supply it. Paytm could make a centralized software and supply it throughout the country. That software keeps on getting used. Okay, if more and more data comes up, you will require more and more servers, but that cost was not substantial cost in comparison to revenues that were getting. Look at this. You will go mad. I'll just search payment mere Paytm investor relations. You will go mad. How Paytm became better with size, understanding of fixed costs. Why am I explaining here? Operating performance of July 2023. Average monthly transacting users. उससे ज़्यादा छोड़ दो, जो loan वाला है देखो. Value and number of loans disbursed or distributed through Paytm. Paytm ने loan दिया क्या? नहीं. Loan किसने दिया? Bank ने दिया. 1 year ago, July 2022, it was 2090 crore in 1 month. Now that same 2090 crore has become 5200 crore almost in 1 month. 5200 करोड़ का लोन पेटीएम के थ्रू मर्चेंट्स को दिया है, जिसका बैड डेट का रिस्क बैंक के पास है, पेटीएम के पास नहीं है. अब आप दिमाग लगाओ, to disburse more loan, did Paytm had to create more capacity? No, Paytm was able to increase its size or sales without by getting better. Cost did, sales went like इसके ऊपर commission मिलता है. Paytm gets about 2-3% commission. So earlier you were getting a commission on 3% of 2100 crore. 3% of 2100 crore. Now you are getting 3% of 5200 crore. Your sales has gone up, but cost did not go up in the same proportion. That's platform. If you can identify such businesses, there are tricks to identify by analyzing operating data. You'll learn those tricks as we progress. I just want to put up the point across to you. Samjha Ayush? Number of loans, 30 lakh people had taken a loan. Now 43 lakh people have taken loan. So I need to identify a business which gets better and better with size. So what I'm trying to tell you is fixed cost is incurred for a particular capacity. Now Paytm वगैरह जैसा business जो है ना, उनके लिए capacity is so huge. Like once you set up the servers, that servers can process billions of transactions. So once the entire capacity of the server to process the transactions over, you have to just put up the server, but the cost of server is so small in comparison to revenues that you get. कुछ समझा? Let me give you another company which you cannot buy. National Stock Exchange Limited. NSE is a company. I had bought it at around 670 rupees to 700 rupees per share.
बैक इन 2017-18 NSE। अब पुराने लेक्चर्स खोल कर देखना, आपको मिलेगा। 600 से 700 रुपए में मैंने खरीदा, अभी चल रहा है 3200 पे। बट उसके बीच में मेरे को हर साल जो डिविडेंड मिलता है, मैं उससे हर साल होंडा सिटी खरीद सकता है बाय डिविडेंड ओनली। अप्रिसिएशन अलग। Why? What is National Stock Exchange? It's a platform which allows buyers and sellers of shares or derivatives होता है to trade on a stock exchange. If more and more people come and start trading on stock exchange, they have to put up a more server. I understand. They have to put what? More and more servers. I understand, but the server cost and the fixed cost of that server is so less in comparison to what? Revenues, that it's peanuts. Not peanut, thoda zyada hai, but it's not like if my revenue is gone up by 100%, my cost does not go up by 100%. My cost goes up by much lower percent. ऊपर का मलाई मेरे पास आता है as a shareholder. उसमें से कंपनी डिविडेंड देता है, उसमें से कंपनी डिविडेंड देता है। दिस ईयर कंपनी मतलब 2-4 दिन में डिविडेंड आएगा अपना, होंडा सिटी नहीं लेगा। सो 2-4 दिन में डिविडेंड आएगा। 80 रुपए का डिविडेंड दिया उसने इस बार एक शेयर के ऊपर। माई कॉस्ट इज अराउंड 700 रुपीज। फॉर मी दैट डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ माई कॉस्ट विच वी फैंसीली कॉल एज डिविडेंड यील्ड इज ऑलमोस्ट 10% और मोर देन 10%। तो मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर का 8-10% तो मुझे हर साल मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डिविडेंड। क्यों? क्योंकि 2017 में इतना ज्यादा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होता था, लेकिन कोविड आ गया, हम खुश हो गया। कैसे खुश हो गया? कोविड के बाद और ड्यूरिंग द कोविड सारा का पब्लिक, अक्की पब्लिक अपना स्टॉक मार्केट खेल रही थी। एडवर्टीजमेंट आए थे, बिटकॉइन ये वो पागल जैसा कुछ भी चल रहा था। दिस वॉज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो इनका क्या हो गया? वॉल्यूम जो था, quantity traded on the stock exchange went up. Cost did not went up in that proportion. Since cost did not go up in that particular proportion, moral of the story is profit went up by much higher percent. So आपको क्या समझना है? अब बिजनेस, अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं इसको मैं फैंसी नाम भी दे दूंगा। क्यों? अल्टीमेटली देन योर वैल्यू गोज अप ना। बट बच्चों प्लीज समझ लो, तुमको थोड़ा बहुत अगर कुछ समझा होगा इससे, क्या करना, क्या कंसेप्ट बोला मैंने आपको? यू हैव टू फाइंड आउट द बिजनेसेस व्हिच गेट बेटर विथ साइज। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? साइज इज बेसिकली सेल्स दैट आई डू और प्रोडक्शन दैट आई डू। अल्टीमेटली प्रोडक्शन इज गोना बी सोल्ड ना। व्हाई डू यू प्रोड्यूस? टू सेल। सो इफ माय सेल्स इज गोइंग अप बट माय कॉस्ट्स आर नॉट गोइंग अप इन दैट पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, please do not irritate by asking useless talks online public. Sir, sorry for asking you, but can you tell me about Vedanta company? I'm here, I'm explaining online public जो time pass वाला है, please get off. I'm using a much better word. So, अरे बच्चों को अकल नहीं आ रही, क्या सिखा रहा हूं वो सुनना। दूसरा आइटम, सर why is Paytm in the loss then? अभी तक नहीं हुआ ना, वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ा है ना। बट व्हाई पेटीएम शेयर फॉल डाउन आफ्टर आईपीओ? बिकॉज द प्राइस ऑफ आईपीओ वाज हाई, इडियट्स हैड इन्वेस्टेड इन आईपीओ। पेटीएम के आईपीओ टाइम पे लोगों को मैं खुद लेक्चर के अंदर बोला था, देयर इज अ नॉनसेंसिकल प्राइस एट व्हिच पेटीएम इज टू बी बॉट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पेटीएम वाज नॉट डूइंग दिस लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। पेटीएम चेंज्ड इट्स बिजनेस मॉडल देयर आफ्टर। कंपनीज इवॉल्व, यू हैव टू बी अ पर्सन व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। टाइप का बच्चा है, इट्स ओके ना। क्या समझा तुमको? फिक्स कॉस्ट, अभी तक एक ही लाइन बोला मैंने, अभी तक और एक लाइन बाकी है। फिक्स कॉस्ट इज incurred for creating a capacity, but there are some businesses where once you create a capacity, you just keep on reaping the benefit. What I'm spending or what time I'm investing on you or what you are spending on a CA course, it's like a fixed cost which will keep on giving benefit for next 50 years of your life. Better you understand that at the early age.
You are spending on a CA course for next, what, 3-4 years, time and money, but the benefit for that is forever. For next 50 years, you will keep on getting the benefit, boss. So Dilip Buildcon पे ऐसा नहीं हो रहा था ना. He bought a machine, started making one highway. There is another order that came up. He had to bid for that highway. He can't take machines from here to that highway. He had to bring another machines again for that highway. If he wants to build highways simultaneously. If Dilip Buildcon has to grow at a time, let's say उनके पास 4 machine है, 4 machine पे 4 highway अलग-अलग जगह पे बना सकते हैं. With 4 machines, they can make what? Let's say 4 highways at a time. If they want to grow more, what they need to do? More machine. There is no alternative, boss. There is no alternative. You have to keep on investing. Either buy machine or take it on rent. Rent or depreciation. Both are fixed cost. Both are fixed cost. So business was not getting better with the size. If you can find the businesses which are platforms. Platforms are the ones where you incur a fixed cost for creating a capacity and then increase. Paytm is a platform. National Stock Exchange is a platform. Zomato is a platform. These are not investment recommendations. I'm just explaining you. Whether you should buy or not, that is, I'm not discussing that. I'm just explaining you platform business. Just because it is a platform doesn't mean you will go and buy. Then the next question comes up, whether the business model is good or not, the price that you are paying is good or not. For that, you require at least 4-5 years of understanding of businesses. Paytm, NSE, Zomato, Flipkart, Amazon, Zerodha, or entire broking industry, Angel One, Nuvama, ICICI Securities, कितने सारे businesses आपको मिलेंगे जो platforms है. IRCTC, Ease My Trip, Make My Trip, क्या बोले? Red Bus, ऐसे बहुत सारे आपको, अरे you will just go mad. You identify the businesses. Microsoft, what? एक बार operating system develop किया, Microsoft Office develop किया, बेचो. Platforms. So if you can find such kind of platform, Policy Bazaar, yes, Policy Bazaar. November 23 के बच्चों को पूछ के देखो. Policy Bazaar और Paytm के हमने क्लास में कितना कमाया था? November 23 के बच्चों ने कम से कम 10 लाख रुपए क्लास में स्टूडेंट से कमाया है बैच के अंदर. जस्ट अभी दिन में उनको पूछ के देखना पॉलिसी बाजार कब बोला था उनको. ये कॉन्सेप्ट को आपके सिलेबस में, ये कॉन्सेप्ट, the concept which I'm trying to explain to you is known as leverage. Taking advantage of some factor. Fixed cost is a very, very important factor in a business. You should know, can I get advantage out of it? Just dial बच्चा बोल रहा है, book my show बोल रहा है. अभी तुमको समझ गया ना? अभी मैं सिखाया ना? Point is, leverage is what? Taking a advantage of some factor. Like some people take advantage of pillar and sleep behind the pillar. नहीं है, मैं just बोल रहा हूँ. और कल वो सेल्फी वाली मैडम थी, पिलर का एडवांटेज ले रही थी. कौन थी? वो गई होगी, वो डेमो वाली पब्लिक रह गई. सो ऐसे बहुत आते भटकती आत्मा रहते ही, हर रोज भटकते रहते. इधर रहेंगे, फिर विनोद सर के पास जाएंगे, फिर मेरे पास आएंगे, फिर किधर उधर घूमेंगे, वहां से घूमते रहते. अलग अलग आइटम रहते ये लोग. अतृप्त आत्मा. क्योंकि ये जगह जो थी ना, ये पहले स्मशान भूमि थी जहां पर ये बिल्डिंग बनी है. तो यहां पे कुछ आत्माएं रहती. विजय सर आपको बाद में स्टोरी बोलेंगे उसका. डरना मत. Point is, no, concept. Listen to this. What did I say? Business, taking advantage. Fixed cost is one of the important element. I should know taking advantage of fixed cost. Advantage means what? I should be able to increase my sales without increasing what? और fixed cost तो increase होगा क्योंकि inflation तो कुछ तो रहेगा. But what should happen? My percentage increase in sales should be more than the percentage increase in cost or fixed cost. Yeah. If right now I'm talking about only fixed cost. Variable cost से फायदा नहीं होता. क्यों? Listen to this. If my sales go up by 30%, variable cost also goes up by more or less same percentage. Why? To make more sales,
I have to produce more. To produce more, I have to incur more variable cost na yaar. So normally when my sales jump by 30%, my variable cost also jumps in CA course by 30%, in real life plus minus by 30%, थोड़ा बहुत आजू बाजू रियल लाइफ में. फिक्स कॉस्ट ऐसा होता है क्या? सेल्स jumped up by 30%, hence fixed cost also jumped up by 30%. No, fixed cost normally changes by percentage equal to inflation, unless until you increase the capacity. तो क्या मैं लाइन बोलूं? On your screen, fixed cost changes due to two parts: price level change, capacity level change. कुछ समझा क्या? क्या थर्ड क्लास पब्लिक आता है यार. सर कॉस्टिंग कब चालू करेंगे? शशांक तेरा आईक्यू जो है ना इतना लो है कि तेरे को समझेगा भी नहीं कॉस्टिंग चल रहा है क्या चल रहा है. यू प्लीज गेट ऑफ विथ सम टाइम पास टीचर, गेट लॉस्ट. सो यही समझा नहीं इनको. फिक्स कॉस्ट, इनका कॉस्टिंग का मतलब क्या है? फिक्स कॉस्ट मींस दिस वन सम. ये तुम्हारी औकात है, बजाना चाहिए ऐसे लोगों को. है अगर अकल ही नहीं है इनको कि क्या चल रहा है. हमने कॉस्टिंग का ही पार्ट चल रहा है फिक्स कॉस्ट. और ये जो सिखा रहा हूं ना इसके बेसिस पे हमारे कॉस्टिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बेस्ड है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. उसके लिए आपको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इन एंड आउट मालूम होना चाहिए. एल्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. सो आई रिक्वेस्ट थर्ड क्लास पब्लिक टू गेट लॉस्ट. जिनको जेन्युइन चीजों में इंटरेस्ट है, जिनको फेक चीजों में इंटरेस्टेड है, जिनको आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू. आई एम इंटरेस्टेड इन दोज हु वांट टू रियली मेक द करियर, हु रियली वांट जेन्युइन कॉन्सेप्ट्स. मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे बट उसके साथ साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए. और ये यूट्यूब वाला पब्लिक तुमको कल तक देखेगा, मंडे से यूट्यूब पे नहीं होएगा. आई एम नॉट. ओ जिन्होंने एडमिशन लिया उनको ऐप आएगा, वो स्टाफ बोल देगा तुमको. तो फिक्स कॉस्ट किसकी वजह से चेंज होता है? दो आइटम की वजह से. आइटम क्या है? नंबर वन, प्राइस लेवल चेंज एंड व्हाट? कैपेसिटी. प्राइस लेवल चेंज तो ऑब्वियस है, और दूसरा है कैपेसिटी लेवल चेंज. कैपेसिटी कब? जो आपने कैपेसिटी क्रिएट की वो चेंज हो गया. तो मेरी कैपेसिटी 1000 टन है ऑलरेडी सेट. 1000 टन इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड एज अ कैपेसिटी. Out of 1000, right now I utilize 300 tons. Current year. Next year, I want to increase my capacity to 450 tons. Will fixed cost change due to this 300 to 450? No, because my capacity is 1000. 1000 is capacity. 300 was capacity utilization. I changed capacity utilization from 300, that was 30%, to 45%. 30% to what? 45%. I have changed the capacity utilization. Did I exceed 100 so far? No. The moment I am gonna exceed what? 100, or even before that, you can't change the capacity overnight. Huh? You have to create a plant well in advance, because some plants take a time to be constructed. So once you utilize your entire 1000 tons, next day you cannot increase. It takes a time. So businesses need to understand this. So my total capacity is 1000, out of which right now I have utilized 300. Right now I have utilized 300. Next year I am planning to utilize 450. My fixed cost will not change because of this. My fixed cost will change because of inflation. Now imagine, you wanna go mad? Do you wanna go mad? What was my capacity utilization earlier? 300 tons in 1 year. Whatever the year it is, I am taking it to what? 450 tons. 450 tons. I'll show you a company on which we have earned CA final का batch था. Around 7 months हो गया होगा. We are sitting on a profit of 180%. I'll show you video if you want. I'll show you the company. 300 tons. To what? क्यों? ये कंसेप्ट मैंने बुक से नहीं सीखा है. ये कंसेप्ट ना मुझे किसी ने सिखाया है, ये मैंने लॉस करके सीखा है. कंपनी का नाम भी बोला. 300 to 450 tons.
But what was my capacity? Capacity is 1000. Year 1, 300. Year 2, 450. How much is the increase in sales? 150 upon 300. Percentage मैं बोल रहा हूं. Your sales have gone up by 50%. Your sales went up by 50%. Sales went up by what? 50%. Why? I improved my capacity utilization. Will fixed cost go up? No. Fixed cost was incurred for capacity, which is how much? 1000 was my capacity. I created what? I increased my utilization from what? 300 to what? 450. 300 to 450. My sales went up by 50%. Do you think fixed cost will go up by 50%? No. Fixed cost will change by 5-6%, which is normal inflation, or maybe 10%, 12% inflation. Whatever is the level of inflation. आपको क्या समझा इससे? You should spot on the businesses before their capacity utilization is going to increase. Find the businesses which have spare capacity and their capacity utilization is likely to increase. Bouncer. Find a business which has a spare capacity and capacity utilization is likely to increase. When this happens, boss, the jump in the profit is massive. Why? My sales went up by 50%, but my fixed cost went up by just 10% or 5%, whatever you want to take up. That is inflation number. आप सोचो ना, मेरा सेल्स 50% से बढ़ा है, लेकिन कॉस्ट 10% से बढ़ा है, तो प्रॉफिट क्या होएगा? Profit will go up by massive number, na? And if the profit goes up by massive number, then logically share price should also go up by massive number, but share price jumps up not after increase in profit. Share price jumps up in advance. Why advance? Market is not made up of the CA full students. Market is made up of a smart people. Market or equity or a business or share price is a discounting mechanism. It discounts the future. Market rarely reacts after extremely good profit. Majority of the reactions generally happen in advance. That is why our institute has a logo. 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐅𝐨𝐫. The one who understands when the entire world is sleeping. टाइम पास के लिए नहीं लिखा है, उसका मतलब बहुत अच्छा है. Company that I had told to CA final kids is the one because of which I helped a lot in my life. Finolex cables. Look at this last 1 year. The batch was somewhere Diwali last. This is where we were. Somewhere around 4. Let me just tell you the exact date and the price if you want. Finolex. I'll tell you the date. Video. Date भी बोलता दूंगा. It was even below 468, 4th of October 2022. 468 पे खरीदा था हमने. 4th October 22. 4th October 22. 468 obviously. That day somewhere in between whatever. 462. वीडियो देख सकता. सुबह सुबह मैंने फाइनल के बच्चों को एक्सप्लेन किया था. फाइनल इज इन द मॉर्निंग. वेयर आर वी? $1,066. I learned a lot because of this life. I spent 3 years of my articleship in this company. And I learned a lot because of the chairman of this particular company. I'll tell you sometime later.
And it does not that Germany is no longer there in this world now. But there are certain logics that will generally not fail. And that is what I want to pass on. इतना अंदर knowledge भरा हुआ है ना, तुम लोगों को मालूम ही नहीं है. और ये इधर बच्चे ऐसे पूछते हो, जो भी था वो शशांक सर कॉस्टिंग कब चालू करके. बेटा यही कॉस्टिंग है. कॉस्टिंग इज नॉट अबाउट डेफिनेशंस. कॉस्टिंग इज नॉट अबाउट जस्ट द सम्स. इट्स वे बियॉन्ड. It's way beyond. Public को नहीं समझता यार. You have to spot. It will allow you to, in accounts, you do post-mortem. Costing will allow you to understand businesses much, much deeper. And this is, I'm just passing, I have just spoken around 5-10% of what I know on fixed cost. I have spoken very little. I have not spoken a lot on lot of factors. Because this itself, now you understand? आप मेरी पोजीशन पे, मेरे साइड पे सोचो ना यार, क्यों इरिटेशन आता होगा. अगर पैसा कमाने में तुमको बोलता हूं इससे ज्यादा कैसे यहां पे कमाऊंगा यार. बट इधर सिर्फ पैसा मिलेगा मेरे को, इधर पैसा नहीं. यहां से इसमें से कुछ भी बच्चे क्रिएट हो गए ना, इतना ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है. वो इंपैक्ट आपको समझेगा भी नहीं यार. बट यही गधों को समझ में नहीं आ रहा है. ये कंसेप्ट अगर आपको इस एज में समझा, आप जाके चेक करना कितने लोगों के समझता है. People look for tips, people look for suggestions, don't look out. I'm not here to give you tips of stocks. I'm explaining you stocks are the businesses with a just objective of not just making a money. Empower this. Your analysis of the businesses, you don't even know the potential of the money that you can make up, the life that you can get. You don't even know. आपने लाइफ देखी नहीं अभी तक. Your life is gonna begin here. मतलब I already started physically, but ये आपको समझना पड़ेगा बेटा. और तुमको चाहिए तो ये सारा एनालिसिस में वीडियो के ऊपर, मतलब उनको भी लिवरेज फाइनल के अंदर है. तब मैंने उसको एक्सप्लेन किया था. It depends on the environment at that point of time. What happened thereafter? That was October quarter. Look at this. October 2022. So this was that particular quarter when the company's profits, operating profit was 93 crore. From fucking 93 crore companies at 144 crores in just subsequent 9 months. अब ये कैपेसिटी का डेटा शेड्यूल 3 में आता है. शेड्यूल 3 के जो डिस्क्लोजर्स है ना, सिखाऊंगा भी आज. चालू हो जाएंगे, आज नहीं खत्म होंगे. उसमें आता है. Now, if a student knows what to spot in an annual report, कैपेसिटी, आप बोलोगे सर हर एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट थोड़ी बैठे. दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी कम्स. हाउ डू आई गैदर दीज कंपनीज विदाउट गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी एनुअल रिपोर्ट. दैट्स वेयर यू हैव टू सेट algorithms. That's where you have to learn technology, and everything of this is possible by chartered accountant. Possible, quite possible. And let me tell you, right now, whatever the trend I am seeing, the majority of engineers or the smart people who maths or other things are taking over in the finance because of people like you are not working. The field is being crowded because, see, there is no boundaries nowadays that a finance has to be done by a chartered accountant. No, gone are those boundaries. There are a lot of engineers or other people who are entering into finance, but you can't enter their domain. You can't go in a hospital and work like a doctor. You can't, but they can. Why? Finance इतना मुश्किल नहीं समझना. आपको लग रहा है फाइनेंस बहुत मुश्किल है, नहीं. जाने दो. मैं तो एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा. मैं कोशिश करने वाला. मैंने आपको जनरल, आई एम गोना ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव वट एवर आई हैव. अब आपके ऊपर है. समझा आपको ये कंसेप्ट? व्हाट लाइन आई एक्सप्लेन सो फार. व्हाट इज योर कैपेसिटी टेल्स यू व्हाट fixed cost. So in my example here, capacity was 1000 tons. For 1000 tons, there is certain cost. That cost is fixed cost. Now the next question that comes up is, how much is your capacity utilization? And for understanding this or everything, I use the services of a 15-year-old kid. Capacity utilization के लिए मेरे को algorithm develop करना था. I use the services of a 15-year-old kid who is not even into chartered accountancy. You don't even know the levels of brain.
कैपेसिटी कहां से आता है? आपको ये you can go to Tijori, and on Tijori you can find out lot of operational data. On a Tijori there is something called as in overview there is a operational data, operational metrics. So for certain companies Tijori does reveal what their capacity utilizations. So what line I told you, if you can find what a company whose capacity utilization is right now below 100 and the capacity utilization is likely to improve is increase, then the profit can increase by much higher percent. There is a potential, guarantee नहीं है, you have to check that potential का probability क्या है. लिखो line, if business has capacity utilization levels below 100%, business has, लाइट क्यों बंद किया? हाँ, अच्छा ट्रिप हो गया. If business has capacity utilization below what 100%, business has a capacity utilization below 100% and these levels are likely to increase. These levels are likely to increase over the coming years or coming months, whatever you want to say, months, quarter, year. These levels are likely to increase. Then there is a potential that profit might increase by higher percentage than percentage change in sales. Profit might increase by higher percentage than what? Percentage change in sales. लिखो नीचे example. For example, capacity 1000 tons. Year 1 utilization 300 tons. Year 1 utilization 300 tons. Likely utilization in year 2. Likely utilization in year 2 450 tons. Likely utilization in year 2 450 tons. केडिया मुझे भी देख दे. वो क्यों केडिया बोलता है यार मैं. Likely utilization in year 2. How much? 450 tons. Capacity was how much? 1000 tons. Year 1 utilization 300. Year 2 450 tons. समझा? Next line. This is 50% jump in quantity produced and sales. This is 50% jump in quantity produced and what? Sold or sales. However, क्या लिखा? However, fixed cost will jump up by 8 to 10% into bracket inflation. However, fixed cost will jump up by 8 to 10% and hence profit will jump by a higher percentage. Profit will jump by higher percentage. So we have lovely dictations, huh? नहीं यार मतलब क्या करे जोशी जी. डाउट है तो अभी पूछो. फिक्स कॉस्ट के ऊपर अभी और पॉइंट बाकी. वेरिएबल कॉस्ट पे आना है मेरे को. ओके जान दो और मैं बक करता हूँ फिर डाउट लेता हूँ. थोड़ा एंड में डाउट लेता हूँ लेक्चर के. I'll take a doubt at the end of the lecture. You have doubt, I understand. Hold on.
Let me explain even more on variable cost. So, listen up to this. Okay, oh, note में आगे लिखो. This concept is technically known as leverage. Into bracket operating leverage. क्योंकि मैं आगे जाके और टाइप सिखाऊंगा leverage के. Just one concept है. This is not the only concept. This concept is known as leverage into bracket operating leverage. Into bracket क्या लिखा तुमने? Operating leverage. अब मैंने बाकी जो बक किया था प्लेटफॉर्म बिजनेसेस एंड ऑल ऑफ दैट कंपनीज के नाम लिखे, कितने लोगों ने नोटिंग करके रखा रे? अच्छा, इतने लोगों ने किया नोट. अच्छा खासा पब्लिक भी है. ये जो पब्लिक है ना, जो अच्छा खासा, उसकी वजह से मेरे को डर लगता है ये नहीं मैं टीचिंग नहीं छोड़ना चाहिए. और ये आयुष जैसे बच्चों को चेंज करना चाहिए. चेंज करके रखूंगा तेरे को, मैं छोड़ूंगा नहीं. समझा? तो फिक्स कॉस्ट इज इंकर्ड फॉर कैपेसिटी. सर, हाउ डू वी नो दैट अ बिजनेस इज लाइकली टू इंक्रीज द कैपेसिटी? गुड डाउट बेटा. अभिषेक मित्र, अक्षित मित्र, ठीक है, मेरे को लगा अभिषेक है इसलिए गुड बोला. स्टिल गुड. पिछले अटेम्प्ट में था वो. क्वेश्चन क्या है उसका समझा? बट सर, हमें पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कैपेसिटी कैसे बढ़ने वाला है? बहुत सारे सोर्सेस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड कीप ऑन रीडिंग इंडस्ट्री रिपोर्ट्स. लाइक बहुत सारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस होते हैं, दे कीप ऑन रिलीजिंग रिपोर्ट. और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कीप्स ऑन गिविंग गाइडेंस. नॉट एवरी कंपनी. There are some companies which give what? Guidance about what? Future. What they expect sales to be next quarter, next to next quarter, or thereafter. अब बोलेंगे सर, from where do we come to know? You should attend conference calls that are conducted by the company after quarterly presentations. So if I go down to screener and documents पे मैं click करता हूँ, there are certain companies which take a conference call. Finolex does not take it. So Finolex takes it. यहाँ पे उसका transcript मिलता है. Transcript is whatever was discussed in the call, or it's a phone call, conference call. Multiple persons join. That's why conference call. So you click on what? Transcript. So if you click on transcript, this is a transcript on 27th May conference call. So Mr. Chhabria would have attended it, Deepak Chhabria. So यहाँ पर everything, there are a lot of questions and answers you should learn. Right now you will not understand a lot of conference call. Your age is not appropriate. But slowly you will start understanding. So when you read a conference calls, Mr. Akshit, you will come to know about the guidance of management. Sir, can you please use the whiteboard instead of blackboard? So, I'll just zoom it up, beta. Huh? But white background and the black text. Now, some people will like black on white, some will like white on the black, depending on the whatever be your choice. I can do nothing about it here. Listen up. Shh. Concept suno. Fixed cost is incurred for creating a capacity. तो देखो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ देखो कैसे. This is graph I am drawing for exam purpose. In real life, it is not going to be like this. X-axis I take up. Okay, I'll explain the real life wala part also. X-axis I take a quantity produced. And y-axis I take a cost. ठीक है, एग्जाम पर्पस वाला, रियल लाइफ वाला भी है. रियल लाइफ का और एक आता है, वो मैं अलग से ड्रॉ करता हूं. ये क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट. इससे आपको और समझेगा. और प्लीज जितने भी डाउट है ना पूछो एंड में. सिर्फ टोटल फिक्स कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट शुड रिमेन कांस्टेंट ना.
with reference to what? Quantity produced. Assumption क्या है? The entire quantity produced is within the same capacity range. Let's say, for example, quantity produced here is 0 tons, here it is 1, and here it is 1000. And your capacity is 1000 tons. Bouncer. Capacity is how many tons? 1000 tons. Capacity is 1000 tons. मुकेश देख बेटा, दिख रहा है तेरे को ये white color. Capacity is how many tons? 1000 tons. जतिन जरा जाके रिकॉर्डिंग जरा चेक कर, वो कलर का कुछ जेन्युइन इशू आता है क्या बच्चों को? बाद में या इसको अलाप को बोल, चेक करेगा. So 1000 tons is my capacity. So if my 1000 tons is my capacity, बच्चों क्या होगा रे? Whether I produce 0 or whether I produce 1000 in a year, huh? This is not a graph of multiple years. This is a graph of year 2022-23, for example. So in that year, irrespective of the quantity produced, total fixed cost will remain same. है ना? Obviously in the same graph, you cannot get cost per unit, but I am trying to draw. Why? Total fixed cost and the cost per unit. जान दो, अलग अलग draw करता हूँ. ये समझा first graph? Let me draw 3 different graphs. This is a graph of what? Total fixed cost. Now I am drawing another graph. एक ही है, जिनको ऑलरेडी मिला है वो वापस मत लेना. Notes, it's only one notes, 60 pages. First chapter है. क्या बोल रहे? अरे 36 पेजेस को क्या अकाउंट का भी दे दिया क्या तुमने? अरे वेट कंफ्यूज. अकाउंट के लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट करना. रुक. क्या बोल रहा है? दोनों दे रहे हैं. ठीक है, तुमको जो करना है कर लो, कर ले. ठीक, आप अकाउंट का एक नोट मिलेगा और अच्छा ये ऐसा दिया है, और कॉस्टिंग का मिलेगा. दोनों कॉस्टिंग के मत लेना या दोनों अकाउंट के मत लेना. एक 36 पेजेस का, एक 60 पेजेस का है. ऑनलाइन पब्लिक तुमको शुरुआत में पीडीएफ आएगा. लिसन अप. एक्स एक्सिस इज व्हाट? गिव अकाउंट्स. सचिन देते. एक्स एक्सिस इज व्हाट? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. व्हाट इज माय कैपेसिटी? 1000. 1000 is capacity. 1000 tons. ये 0, ये 1000 है. And y axis is a cost, but this is a graph of cost per unit, जिसको आप फाउंडेशन में average fixed cost बोलते थे. In a foundation you called it as what? Average fixed cost. Cost per unit is declining. Why? Common sense in air. Total cost is remaining same, but as I produce more and more, what will happen? Average cost will keep on coming down. Average cost will keep on coming down. Do you understand? Average cost is coming down. When does average cost come down, बच्चों? अरे बोलो. When the quantity produced goes up. Quantity produced goes up, fixed cost comes down on a per unit basis. But on total basis, fixed cost is fixed. Are you clear? These both the graphs are for. Both the graphs are for same year. 22-23 and for same capacity. How much capacity I took? 1000. Graph is not to measure, graph is just to give you a feeling. What feeling? How the cost is. That feeling I am trying to give you. Are you clear on this? Listen up carefully now. Let me draw one more graph. Are you done with both the graphs? No, kya no? Jaldi kar. First is the total fixed cost which is constant. Second is the average fixed cost which comes down. Third.
Third one is a crazy one. CA syllabus is over with the first two. थर्ड वन देखो, ठीक से देखना बच्चों, लवली है इट इज. X axis I am not taking quantity, X axis I am taking year. Year 1, 2, 3, 4, 5, like this. Multiple years. What will happen to the fixed cost, total fixed cost? Logically, total fixed cost should increase. It may not increase by the same percentage every year. Huh? It is just to give you a feeling. What is this feeling? Total fixed cost. ये ग्राफ कौन से ईयर का है? 22-23 का है क्या? नहीं, अभी अलग अलग ईयर है गधो. एक्स एक्सिस पे ईयर लिखा ना. एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर लिखा कि नहीं लिखा? हर साल क्या है? अलग अलग फिक्स कॉस्ट है. ये क्यों चेंज हो रहा है रे? प्राइस लेवल चेंज, इंफ्लेशन लेवल चेंज. क्यों एक्सप्लेन किया इनको? वाई एक्सिस पे क्या है? कॉस्ट है. टोटल फिक्स कॉस्ट इज चेंजिंग. नेक्स्ट. अभी तक फिक्स कॉस्ट के ग्राफ चल रहे, वेरिएबल पे मुझे गए नहीं. फिक्स कॉस्ट ही समझना मुश्किल है. हो गया क्या? अब क्या करूं? और एक ड्रॉ करो. 0 टन्स, 1000 टन्स, 2000 tons, 3000 tons. So x-axis is what? Quantity produced. It is step up cost or fixed cost which changes as capacity changes. This is for 22-23. X-axis is quantity. So as quantity produced goes up beyond certain level, fixed cost changes. This is also called the step up fixed cost. What do we use? Step up. Basically, it is nothing but fixed cost is incurred for a particular capacity. If capacity is between 0 to 1000 utilization, fixed cost will be this much. But your capacity utilization is between 1000 to 2000, fixed cost will be little higher. Or do you understand? चेक करो, चारों ग्राफ ड्रॉ करो. ऑनलाइन पब्लिक तुमने भी ड्रॉ किया होना चाहिए. और ये कॉस्टिंग ही चल रहा है शशांक. क्या पब्लिक आ गई जतिन? डाउट? अभी चलो डाउट लेता हूं. वेरिएबल कॉस्ट पे जाऊंगा मैं. पहले डाउट बोलो. You have doubt on anything other than sir show this, show that? देखो मैं वापस ग्राफ दिखाता हूं तुमको. किसी को भी कोई डाउट है पूछ सकता है तुम. लेट मी फर्स्ट डू दैट, शो दिस, शो दैट. वो टाइप के डाउट, मेजॉरिटी डाउट वो टाइप के रहते. वापस ये दिखाओ, वो दिखाओ. ये दूसरा ग्राफ था, ये तीसरा ग्राफ था, ये चौथा ग्राफ था. हाँ अच्छा, सेकंड वाले ग्राफ में प्राइस मतलब वो कम क्यों हो रहा है सब? सेकंड वाला ग्राफ क्या है? कॉस्ट पर. देखो देखो भाई साहब पूछ रहे हैं ऐसा कॉस्ट पर यूनिट कम क्यों हो रहा है? मैं बोलता हूं फॉर 1000 टन्स फिक्स कॉस्ट इज ₹20,000. ठीक है? फॉर नहीं, सॉरी, फॉर शुड बी रॉन्ग वर्ड. अप टू 1000 टन्स फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच? अरे रिस्पॉन्स देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड फिक्स कॉस्ट टोटल. ये फाउंडेशन में ही था कंसेप्ट. एवरेज टोटल कॉस्ट बंक मारा होगा उसने. क्वांटिटी प्रोड्यूसेस 200, फिक्स कॉस्ट विल बी 20,000. व्हाट इज एवरेज टोटल कॉस्ट? नहीं गधे, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट पर unit. Tell me how much it will be. 20,000 upon 200.
10,000. वाह रे वाह, वाह केड़िया, वाह वाह. 100. Quantity produced 500. Fixed cost 20,000 per unit. 40. अब समझा क्या कैसे कम हो रहा है? ये तो पता था, तो वही ग्राफ में ड्रॉ किया ना गधे. क्या है 0 to 1000. ये कम कम हो रहा है ना, ये पता था तेरे को, तो वही तो ग्राफ है ये. मैंने ये ग्राफ 0 to 1000 के लिए किया. अगर आपने कैपेसिटी और ऐड किया तो वापस चेंज होगा ना वो. आई हैव शोन इट ओनली अप फ्रॉम 0 to 1000. व्हाट इज बियॉन्ड दैट आई हैव नॉट शोन. यू हैव टू ड्रॉ. 700. 20,000 बोलो. 28.57. So this is fixed cost per unit. If capacity, like, you'll have to check out, if I have to put up additional capacity, how much is additional fixed cost? That depends. You can't, इसके बाद का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते आप, उसका पैटर्न कुछ भी हो सकता है. See, for putting additional capacity, how much is the additional cost? That depends, na? So obviously you can draw it here, like 1,000, 20,000. Cost per unit is 20. Now I want to produce 1,200 units. For 1,200 units, how much will be here? That depends on the nature of machinery, nature of business. उसका comment in general करना मुश्किल है. What comment I passed? Up to a certain capacity, which was 1,000, cost per unit will keep on declining. Let me take online doubts first, क्योंकि ये impatient लोग हैं. कलर चेंज करना. इको में स्टेप अप वेरिएबल कॉस्ट करते था ये चार्ट, करके था ये चार्ट. अच्छा, इसको तुमने वेरिएबल कॉस्ट बोला था. व्हाटएवर, इट इज अ फिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी मैं बोलूंगा इट्स अ फिक्स कॉस्ट. ये क्या था? स्टेप अप मतलब क्या था? बेसिकली इफ योर कैपेसिटी इज 0 to 1000, दिस मच इज अ कॉस्ट. 1000 to 2000, दिस मच इज अ कॉस्ट. 2000 to 3000, दिस मच इज अ कॉस्ट. Sir, why are we only considering fixed cost per unit and not total cost? अरे आऊंगा ना मैं. Right now I have not explained variable cost. That's why I am talking just about fixed cost per unit. I will come down to total cost, beta. I have taught only what? Fixed cost. Be patient, Neha. Will come. What will happen to average fixed cost if quantity exceeds the capacity? Rajat, I answered that just now. If quantity exceeds the capacity, what will happen? I can't comment in general. Why? If quantity goes to 1,200, how much will this be? This can be just 21,000, or this can be 31,000, or this can be 41,000. That I don't know, na? How much will that be? So I have passed a comment only on what? 1,000 units. Up to 1,000 units capacity, my total was this much. So beyond that, it can increase per unit, it can decrease per unit, depends. Sir, आप 100% प्योर एफर्ट लगा के सिखाओ सर. बट 50% 60% समझ में आता है. ठीक है ना? तुमको कहां पर मैंने बोला तुमको बेटा मैंने 100% सिखाया और तेरे को 100% समझा, तो तू स्टूडेंट नहीं ना, तू मेरिट रैंकर होना चाहिए. तू तो मतलब ऐसे होना चाहिए. तू देयर इज नेवर, अगर आपको है ना, लिसन टू दिस लाइन, दिस इज अनदर सीक्रेट. इफ आई टीच 100% एंड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट आई टॉट, आई एम नॉट अ गुड टीचर. व्हाई? क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज सिखा रहा हूं जो आपकी लेवल की है, या बेसिक चीज है. अगर मैंने भूषण चौधरी, मैंने अगर ये तेरे को एडिशनल चीजें एक्सप्लेन नहीं की, तेरे को सब कुछ समझा, तेरे को लगा तो मैं ग्रेट टीचर. दैट इज अनदर सीक्रेट ऑफ हाउ टू फूल द पीपल. टॉक बेसिक, टॉक नॉनसेंस, टॉक सिंपल, लेट द ऑडियंस डाई. नेक्स्ट, सर ड्यूरिंग स्टेप अप फिक्स कॉस्ट वुड इट बी सिमिलर टू वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट यू विल अंडरस्टैंड, हैव पेशेंस. स्टेप अप फिक्स कॉस्ट में कैपेसिटी एक्सेस रहेगी तो क्या होगा? नेक्स्ट, ओवर द इयर्स टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट.
ऑब्वियसली यही तो एक्सपेंशन है ना. ये क्या था? Over the years, if I keep on doing expansion, obviously my total cost will undergo a change. ये cost change हो रहा ना मेरा expansion. Capacity पहले 1000 था, next year मैंने 2000 किया, या next year मैंने capacity बढ़ाया. Next, बोलो. Step up cost के कुछ example. अरे क्या बेशरम अकल है, बेअकल है. अरे example means what? If अरे every cost is a step up cost. For example, classroom. Ekatvam, this classroom is of 800 students capacity, right? 800 students capacity, let us say rent is 3 lakh rupees. Clear? Now let us say we want to accommodate 1200 students. What we'll have to do? We'll have to buy another classroom, or we'll have to take another classroom and rent. So I say rent is a step up cost. How? Up to 800 students, rent is 3 lakh. But 800 to 1200 students, if we go, we need additional 1 lakh rupees ka rent, for example. So 3 lakh plus 1 lakh, my total cost becomes 4 lakh. What you people are not understanding is x-axis is what? Quantity produced. As my quantity produced jumps beyond a certain level, as a quantity produced jumps beyond a certain level, my total cost also, or my fixed cost also jumps up. So majority, literally every fixed cost is a step up, because fixed cost is incurred for a particular capacity. The moment I decide to increase the capacity, my fixed cost jumps up. अब वो jump कितना होगा? हर बार एक step का size same रहेगा या नहीं रहेगा? That depends. क्यों? That depends on the businessman. You might not expand by 1000 every time ना. ये पहला जंप मेरे को 1000 का लेने का, दूसरा जंप मेरे को 200 का लेने का है. It is technical factor. We can't comment in general. What you need to understand is this much of, up to this much capacity, my cost is this much. Can inflation rate have great impact on fixed cost? It can. Fixed cost is affected by price level changes. I told ना. So inflation बहुत ज्यादा हो गया तो तुम्हारा fixed cost बहुत ज्यादा बढ़ सकता है. अब कौन से cost में कितना inflation है, that you'll have to check it out. Sir, मैंने conclusion, sir, main conclusion of this, मतलब capacity 1000 की है, लेकिन हम 500 ही प्रोड्यूस कर रहे थे, तो बाद में 600 प्रोड्यूस किया, तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, फिक्स कॉस्ट नहीं. लेकिन 1100 प्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट चेंज होगा. आई डोंट नो व्हाट शी इज सेइंग इन हिंदी. लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश. शी वांट्स टू टॉक अबाउट वेरिएबल कॉस्ट फॉर रिमेनिंग्स. अच्छा, मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, उसने हिंदी में ट्रांसलेट किया. ओके आर्या, लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश अगेन. If your capacity is 1000, right now you are utilizing 500. Tomorrow you decide to produce 800, for example. From 500 you are jumping to 800. Arya, fixed cost will change. Fixed cost will not change, but variable cost will obviously change. वही बोला ना उसने. Arya, what you are saying is right. उसको अच्छा लगेगा ना. So up to 1000, this much is a cost. From 500 to 800, fixed cost will remain same, but variable cost will obviously change. Anyone else out here? Yes. Can bear capacity, spare capacity, हाँ, कैसे ढूंढ सकते? How to find spare capacity? When a business say we are utilizing 40% capacity, it means spare is 60%. How to find a spare capacity? If you find utilization is 40%, disclosures में दिया रहता है. Once you understand notes to account, they say we have produced this much, our capacity is this much. You calculate how much is used.
You have lot of spare capacity in your brain because your utilization seems very low. How to find spare? See, if I say I have used 40%, should I explain to you people that my balance is 60%? मम्मी ने आज रोटी कितना दिया था तेरे को डब्बे में? 4 दिया था. तूने कितना खाया? 4. How much you consume? हाँ? कहां ढूंढ सकते हैं? मैंने नोट्स टू अकाउंट, कॉन्फ्रेंस कॉल पहले बताता तब सो रहा था. There is no one single place. सर लाइव स्ट्रीम वालों का नोट्स कब मिलेगा? लाइव स्ट्रीम वालों को 7-8 दिन आएगा आपको कुरियर आने के लिए बेटा, तब तक आपको पीडीएफ मिलेगा. आई विल शेयर द पीडीएफ. फेस टू फेस स्टूडेंट्स हैव गॉट फिजिकल आएगा आपको, सबको आएगा. थोड़ा कुरियर करने में तो टाइम लगेगा ना बेटा, कुरियर प्रोसेसिंग सब कुछ टाइम लगता है, तो तुम डेमो का देखेगा. इट्स ओके, एवरीवन विल गेट इट. इनिशियली यू मैनेज ऑन अ पीडीएफ ऑनलाइन पब्लिक. जो ऑफलाइन है तुमको तो मिल गया, तुमको कलर वाला भी मिलेगा. नेक्स्ट, एनीवन एल्स? जी बेटा, थोड़ा घटिया डाउट है, बाद में पूछ. नेक्स्ट, और इरिटेट मत कर. अच्छा डाउट. हाँ, his question is, sir, our capacity is 1000 tons. Right now we are utilizing 400 tons, for example. Can remaining 600 tons which is not utilized or a spare capacity, can we call it as opportunity cost? You can call it as an opportunity cost. The moment you set the business, moment you invest a capital in your business, there is always an opportunity cost. The moment you start a business and you put up a capital in a business, opportunity cost starts at that point of time. क्यों? That capital you could have put up somewhere else. वही तो मैंने कल बोला था ना आपको, ईवा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. सो क्या डाउट है? टुमारो विल बी द लास्ट डेमो. यस, फॉर माई लेक्चर्स टुमारो विल बी द लास्ट डेमो. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ डेमो पब्लिक. विजय सर, दर्शन सर, उनका चलता रहेगा तो वो डिसाइड करेंगे. मैं मंडे से तुमको लिंक नहीं मिलेगा. सर, कैन देयर बी द केसेस वेयर विथ इंक्रीज इन कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट विल कम डाउन? I have not come across any business. I don't think there should be some reason like your capacity right now is 1000, you increase it to 1200 and the fixed cost comes down. Not possible. Why? Everyone will increase the capacity then. Why to operate at a lower capacity? मतलब by taking more classroom, rent comes down. There cannot be a case like this. Anyone else? 2 मिनट बाकी है. 428 हो गया ना? अरे 445. Oh shit! Variable cost. Shit. बूढ़ा हो गया अभिषेक. Listen up to this. Variable cost. It's okay. तुम्हारा अब तुम देखो ना, तुमने इतना सोचा था फिक्स कॉस्ट के बारे में? मैंने कहां से कहां आपको लेके गया. अगर किसी ने नोटिंग करके रखा होगा, किसी ने सोचा होगा, ऑटोमेटिकली ब्रेन स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग एंड दैट्स द फन. और मैं अभी तक सेमी वेरिएबल पे गया नहीं, इसके ऊपर मैं रेशियोज निकालने वाला हूं, मार्जिन्स निकालने वाला हूं इन कॉस्ट के ऊपर. और धंधे का मैं 3 एंगल्स से एनालिसिस करने वाला हूं. 3 डिफरेंट एंगल्स. Hopefully that should happen by tomorrow. Listen up to this now. Are you done with this? Variable cost, a cost which changes with reference to quantity produced. ये तो हमने already ऊपर लिखा है. Cost which changes with reference to. Now, what I'm writing is not completely true, but that is what
वी हैव टू अज्यूम फॉर एग्जाम अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, तो मैं पहले लिख रहा हूं अनलेस अदरवाइज गिवन, unless otherwise given, unless otherwise given, variable cost per unit remains same. Variable cost बहुत आसान है समझना, क्यों यहां पे there is no concept of capacity है. Variable cost per unit remains same. Why? It's a cost of producing one unit. For example, I need to produce a fan. I say, for producing fan, I require 3 kgs of steel, assuming 3 kg is the weight. So if I decide to produce more fans, I'll require more steel, but the proportion of the steel is gonna remain same. Every fan is gonna require 3 kgs. Do you understand? So 3 kg ka cost per unit remains same. Obviously, if the price level changes from 1 year to next year, obviously there will be change. This is unless otherwise given. Otherwise means price level can change. No? Price of the steel can change. Price of raw material can. So unless otherwise given, variable cost per unit remains same. Total variable cost changes. Total variable cost changes with reference to what? Quantity produced. Total variable cost changes with reference to what? Quantity produced. If you per unit is constant and quantity produced goes up, what will happen बच्चों? बोलो ना. Total cost क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. What are the examples of variable cost? Raw material. Raw material is a variable cost. Commission on sales, if you are giving to commission on what? Sales. If you are giving for distributor. Wages or salary of the persons engaged in production. Wages bolo ya salary bolo, that is up to you. Wages or what? Salary given to whom? Persons engaged in what? Production. Raw material आ गया, wages आ गए तुम्हारे, और rent can be variable cost, can be fixed cost. Generally rent is a fixed cost. Rent can be variable cost in case of malls. So you have a restaurant or a shop in a mall, and the rent is not per square feet. Rent is percentage of what you sell. There are cases where rent is percentage of sales. Like I have a, let's say, store in a mall. Like we have 𝐓𝐴𝐷𝐸 store. I told you we run an organic farming store. So we have organic store in JWD Bombay. In case you know, Geo World Drive. So JWD mein we have stores where we pay around 10 to 12% of sales as what? Rent. So we don't pay area. We pay 10 to 12% of our sales as what? Rent. आप बोलेंगे सर आपने sales दिखाया नहीं तो? That's what I told you yesterday in accounts lecture. Accounts से costing I don't remember. 𝐻𝐻 software करके company है. There are softwares which are created by the mall owner only. You can do the billing only from that software. So there are internal controls that they keep, none of your business. So rent can be a variable cost. Electricity can be variable cost if for electricity which is used in production. Electricity which is used for office will not be variable. But electricity of a factory can be what? Variable, provided your production machines require electricity. जरा 2 मिनट जरा शुभ बट. There can be electricity जो cost होता है उसमें lighting भी आता है. Lighting जो रहता है it doesn't vary with reference to quantity produced. Let's say मेरा shop floor है. Shop floor में एक दिन में मैं 1000 यूनिट बनाऊं या 2000 यूनिट बनाऊं, लाइटिंग का कॉस्ट सेम रहता है. बट जो मशीन चलता है उसके नंबर ऑफ आवर्स अलग हो सकते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी विच इज यूज फॉर
machine can vary with reference to what? Production. लिखो electricity. So electricity क्या समझा तुमको? Electricity expenses क्या है ये electricity expenses? Variable cost. Electricity expenses used in what? Production oblique what? Manufacturing. Is nothing but what? Variable cost. Transportation can be variable cost. Freight on purchase. It's basically, we call it the part of purchase cost. That is raw material. Na? Raw material का जो cost है, that is going to cover up purchase cost as well as freight, all cost related to purchase. So variable cost है. So if I draw a graph here, is variable cost dependent on capacity or quantity? Yes, but just a second. ये quantity है यहाँ पर. ये क्या है? This graph is variable cost per unit unless otherwise given लिखा है मैंने ऊपर. Unless otherwise given per unit पे variable cost क्या रहता है बच्चों? Same रहता है. और total basis पे variable cost क्या होता है? बढ़ता है. Total basis पे fixed cost क्या है? बढ़ता है. Variable cost. This is which cost? Total variable cost. Do you understand total variable cost? I hope you understand. Total variable cost. Total variable cost क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ते रहता है. और per unit variable cost क्या रहता है? Constant रहता है. Per unit variable cost is constant. Total variable cost increases. But ये जो line बोला ना मैंने, variable cost per unit remains constant is not completely true, because in some cases as quantity produced increases you get economies of scale. You get economies of what? Scale. कैसे? If you are buying more, your purchase price can come down on a per unit basis. Instead of buying 1000 kgs at a time, I decide to buy 5000 kgs at a time. Do you think the supplier will charge me the same rate? Total amount तो बढ़ेगा obviously, but per unit amount does come. So लिखो नीचे note. In reality, due to economies of scale, due to economies of what? Scale, per unit क्या लिखा तुमने? Per unit variable cost. Per unit variable cost does, per unit variable cost does come down. For example, discount. For example, discount. तुमको discount मिलता है ना? Sir, what is the logic that per unit variable cost remains same? अरे बाबा, every unit will require same quantity. अगर मैंने एग्जांपल दिया अभी फैन का. If I'm producing one fan, how many kgs of steel I need? 3 kgs. If I produce 10 fans, okay, I need 3 kgs of steel at the rate of 25 per kg. तो मेरे को स्टील कितना लगा? ₹75 का स्टील लगा. अज्यूम करो, रेट नहीं है सही, कुछ भी फेंक रहे हैं. One fan is what? Finished goods, or fan is my
cost object. Fan is my product. Fan is my, one fan needs how many kgs? 3 kg of what? Steel. 1 kg of steel is available at the rate of, so कितना steel लगा? 75. ये क्या है? Total cost. What is cost per unit of finished goods or per unit of cost object? Cost per unit of cost object is 75 only. 75 upon 1. 75. Mr. Chaudhary, look at it. Now I decide to make 10 fans. How many I'll need? How many kgs will I need? 30 kg steel लगेगा मुझे. At the rate of 25 per kg. Assume, unless otherwise given, we assume डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, तो मेरे को टोटल कितना लगेगा स्टील? 750. बट फॉर 10 फैंस पर यूनिट 75 है. नाउ लेट अस मेक 15 फैंस. 15 फैंस इंटू 3 kgs ईच फैन. आई नीड 45 kg ऑफ स्टील एट द रेट ऑफ 25 पर kg. अभी कितना आएगा ये? 11. ये 75 रहेगा. बट लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं नहीं, मुझे 4000 फैन बनाने हैं, 4000 इंटू 3, आई विल बाय 12,000 kg ऑफ व्हाट? स्टील. एंड आई से एट द रेट ऑफ 23 पर kg. क्यों? सिंस आई एम बाइंग मोर, आई एम प्रोड्यूसिंग मोर, आई एम बाइंग मोर, आई माइट निगोशिएट अ डिस्काउंट. तो क्या हो जाएगा? टोटल कितना आएगा? 2 लाख. बट पर यूनिट कितना आएगा? चौधरी जी 69 आ गया. कम हो गया कि नहीं हो गया? कैसे कम हो गया? डिस्काउंट. वही तो नोट लिख के दिया ना मैंने. तो जनरली अनलेस अदरवाइज गिवन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम. ये रॉ मटेरियल है. अब वेजेस ऑफ द वर्कर्स एंगेज इन प्रोडक्शन भी सेम रहेंगे. अब बोलेंगे कैसे? To produce every unit, you say 2 hours are required. Instead of 3 kgs, I will say 2 hours. And wages will be per hour so and so. तो लिखो ये टेबल. Logic. We give logic, huh? Sir, is there any form that you have to fill up for receiving books? Yes, you'll get to know. Have patience, right now just use a PDF. ऑनलाइन पब्लिक सारा कुछ इंफॉर्मेशन आएगा. डरना मत, सब कुछ आ जाएगा. पेशेंस. नेक्स्ट वीक सब कुछ आ जाएगा तुमको. ऐप का लिंक आएगा, लेक्चर देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आएगा, सब कुछ एडमिन स्टाफ देखेगा वो. डरना मत. मेरे को मत इरिटेट करना प्लीज. स्टाफ रखे ना यार, सैलरी दे देना. वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट है गधे. सर एडवर्टीजमेंट इज अ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट? Good doubt, Shashank. Depends on what type of advertisement. There can be variable, can be fixed. क्यों? I pay to advertiser percentage of sales. So then advertisement will be variable. But generally advertisement is a fixed cost. Generally कोई ऐसा sales का percentage advertisement के लिए नहीं देता है. उसको हम commission बोलते हैं, advertisement नहीं बोलते. If you remember, मैंने ऊपर commission लिखा था. कमीशन इज अ वेरिएबल बेटा, बट एडवर्टीजमेंट जनरली फिक्स रहता है. बट अगर तेरे को देना करना ही एडवर्टीजमेंट, कर सकता है ऐसा. ऐसा बहुत कम केसेस में रहता है एडवर्टीजमेंट. लाइक आई नो वन कंपनी विच डज दिस, बट ओनली फॉर लार्ज स्केल क्लाइंट. एफले, AFFLE करके कंपनी है, which does a social media advertisement for large companies. मतलब you must have at least 5 crore, a million or 2 million app users, then only they take you on board. And they say अगर आपका ये हमारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू या आपके थ्रू सेल हो गया तो ही आप हमें पैसा देना. हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, आपका सेल हो गया तो पैसा देना, नहीं तो नहीं देना. बट बहुत रेयर केसेस में देते हैं वो ऑप्शन. दे डू नॉट गिव दिस ऑप्शन टू एवरी टॉम डिक हैरी. I hope you understood why variable cost is same per unit. तो मैंने क्या लिखा था यहां पर, पढ़ो वापस. Unless otherwise given, variable cost per unit
remains. Total variable cost changes with reference to. So, anyone has a doubt? Right? Take a break. वो अकाउंट्स के नोट्स कलेक्ट करना जिसने कलेक्ट नहीं किए रहेंगे, जल्दी सुसु करके आ जाना वापस.